If you're looking at the economy this morning when you get up, and if you're into the stock market, you should be very happy. Some 69,000 the stock market. Should be very happy. If you're looking at the economy through the eyes of the billionaires, you should also be very happy. And we have nothing against billionaires, may their tribe increase. From 142 billionaires in India 3 years ago, that number is now 169. Good. If you're looking at the economy through the eyes of the richest 1% of everyone in India, you should also be happy because the richest 1% control some 40% of the total wealth. And since the finance minister is here, and thank you, ma'am, for being here, because whenever we try and have some meetings with ministers with our state government, the Minister of State is sent to meet us. So I really appreciate that the minister herself is here. If you're looking at it through the eyes of the finance minister, you should also have not a bad Tuesday afternoon, thinking that the GDP is projected to grow at, or had 7.6% in the second quarter. Sir, but if you look at the economy through the eyes of any family, anywhere in the country, what will those eyes looking at the economy tell you, sir? Those eyes will tell you that from 2014 to 2023, the price of rice has gone up by 56%, the price of wheat by 59%, milk by 61%, tomatoes by 115%, or tur dal by 120%. Gas now has come down, but before the elections it came down. And there is a saying in Bangla, sir, Hajar takai ranna hocche bina poishar chal. You must have picked up some Bengali. Hajar takai ranna hocche bina poishar chal. In other words, the Prime Minister is giving you the gas, which is 1,000 rupees. The rice is free, but the gas is 1,000 rupees. Sir, if you look at this economy, and this is somebody I actually met, her name is Nupur Hati. She's from Hooghly district. Nupur Hati clutches on to her laminated job card because she hasn't received her Manrega wages. Or look at the economy through the 21 lakh workers who, like Nupur Hati, has worked, but it's been 2 years, even though she was guaranteed 15 days, she has not received these wages, adding up to some 15,000 crores. That's only one state. If you take all states, the number will be more. Or if you look at this economy through the eyes of any young man or young woman, and the economy, and he or she will tell you that 25% of youth unemployment. So through you, sir, I ask this government, has this wealth which has been created, has it been passed on equitably? Has it been passed on equally? And that's the point today, sir, of what we are discussing. Yes, you have your moments, give us all the numbers, but has it gone to the bottom of the pyramid? And that's the single point today, sir, of what I am trying to say. And tell us, Madam Finance Minister, rural inflation higher than urban inflation for the first time in 6 years. And this is not election rhetoric. These are hard numbers. Household savings depleting. It is at a 50-year low in 22-23. Farmer welfare. We have to ask ourselves, why are 150 farmers committing suicide every day?
Sir, yes, let the stock market go up, let the billionaires go up, sir, but spare a thought, or more than a thought, for the marginalized, for the vulnerable. India has the world's highest number of poor people at 23 crores. This is what this debate on the economy should be about. The bottom 50% of our population possess only 3% of the wealth. Sir, and on a Tuesday afternoon in this plush-looking glitzy building, we must remind ourselves why 3 out of 4 Indians cannot afford a healthy, balanced diet. Or, worse still, why 2 out of 3 children in India under the age of 5 die of hunger. Sir, this is not the time to talk about what happened 70 years ago and what happened 60 years ago. That's why, without doing any politics, we are presenting some numbers, and we want the government to address these issues and find solutions to these issues. Many promises have been made. I'm not going there today because on the promises and the delivery, I want to stick very, very clearly with the economy. Sir, the point which I make on this last... But I'll give you more time. Thank you, Continue. sir. Time allotted was I've got 12 3 minutes. minutes. They told me 12, so I don't know. 12 is there. 12. 12 is over. But continue. So while on the subject, nothing to do with this, you know, it's difficult for us to see the time because the timers are behind us. I'd request you to... You had made a suggestion. We are doing something about it. Thank you, sir. Sir, then let me conclude. Because we have to look at the priorities of this government. I started off my story with elections. Who wins? You win. Yes, BJP, you win elections. It's another matter when you fight us, you don't win elections, we win elections. So let's compare equals. You win, we win. You have an outlook on the economy. Mamata Banerjee's Trinamool Congress has an outlook on the economy. What's the difference in the outlook? So 1, 2, and 3 points. Indian economy is expected to grow at 7% in the current financial year. Bengal growing at 8.4% in the current financial year. I want to leave these numbers here because when we are doing this growth in Bengal, it is not a divisive growth. It is an inclusive growth. Everybody has taken along. And so let me just finish, then you can share. I'm just in the middle of a thought. It is because you had a good governor for 3 years. Go ahead. Yes, sir. Let me confirm, sir, that's the only reason all this happened. I only don't want to add 3 points. So I gave you the growth number. I want to take one other number of one social sector view. On our view, the Trinamool view, because they win and we win, and the BJP view. And I'll give you one more economic number, sir, and then I'll give you the social sector. On the All India Index of Industrial Production, the national average 22-23 is 5%, and Bengal's growth on this has been 8%. So this is the economy. And I'll end with one more example. As I said, it's just one example on the outlook. You have your Beti Bachao program. And in the outreach for that program, about 80% of your budget for the program is for publicity and advertising. My question is, will this government and the answer tell us how many women's lives were actually touched by this program? In Bengal, which the United Nations
acknowledged. We have a program called Kanyashri. If you ask me how many lives were touched, I will give you an exact number. 78 lakh women benefited. Sir, I'll conclude by saying that yes, you win, we win. You have a view on the economy, we have a different view on the economy, and there's even another very, very big difference between who you are and who we are, because we also believe that no one can worship God either in a mosque or in a church or in a big temple, or love his neighbor on an empty stomach. Thank you, sir. Honorable members, I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Sudhanshu Trivedi. (25 minutes). Dr. Trivedi, 25 minutes. Your time starts there. Go ahead. माननीय सभापति महोदय, आज हम देश के आर्थिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए इस सदन में एकत्र हैं और मैं आशा करता हूं कि अर्थ के इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा से कोई सार्थक निष्कर्ष हम तो हमें अधिक बेहतर और सार्थक पक्ष नजर आएगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013। मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है, वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में जब अगर आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं हैं, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, पीएफ में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था
तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी जी टू कम इनटू पावर। और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 4%, इसका मतलब हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब ये सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानी बात है, वो 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरेगा। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके, घरेलू सामान खरीदने से लेके, बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है, तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। और मुझे यह भी याद आता है मान्यवर, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, एक दौर था जब भारत का, मैं 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था। 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। लोगों को याद होगा जुलाई अगस्त की बात, तो एक 91 की दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल कुछ आंकड़ों को देख लें कि हमारे बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कहता है, एज चाइनाज इकोनॉमी स्लोइंग, द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू पावर अहेड द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ लीडिंग ग्रोथ इन द रीजन। मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो पहले कहता था, द फेमस मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इन जनवरी 2014, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया हैज फॉलन इनटू फ्रेजाइल 5। और द सेम मॉर्गन एंड स्टैनली इन अक्टूबर 2013 कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एट इट्स मोस्ट प्रिफर्ड एमर्जिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स ओवरवेट स्टांस इन इंडियन इक्विटीज। यानी वही जो कहता था कि हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे है, वो अर्थव्यवस्था अब हमारी उभरने के कगार पे उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर एंड देयर आर ओनली अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज यूएस एंड इंडिया, सेज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। A working paper released in April 2023 says, stacking up the benefits lessons from the Indian digital journey. इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसने भारत को एक नए स्वरूप में पहुंचाया है। और इसीलिए यह कहा है आईएमएफ ने कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यह केवल ऐसे ही नहीं हुआ है। अगर आपने देखा कि लास्ट मंथ में फिच ने अपनी रेटिंग भारत की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी और चाइना की 5.2 से घटाकर 4.5 कर दी। इसीलिए मैं सिर्फ मेजर इकोनॉमी से कंपैरिजन कर रहा हूं। यह दर्शाता है कि दुनिया किस हालात में है और मोदी जी के नेतृत्व में हम किस हालात में हैं, इसे समझने की जरूरत है। और यह क्यों हुआ?
क्योंकि हमारी वित्तीय नीतियां बहुत सार्थक और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बजट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। रेल, रोड, पोर्ट्स बने। गरीब कल्याण के लिए चाहे 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान धन देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा अनाज देने की जरूरत पड़ी। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इसकी क्या जरूरत थी। मान्यवर, जब सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी, अगर आप किसी को पैसा दे देते तो वो चीज की व्यवस्था करता कहां से, इसलिए वो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था थी। और अगर हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में 58.4 हुआ है, जो कि सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट है पिछले 13 वर्षों में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 28 कंसेक्यूटिव मंथ में वो बढ़ता हुआ 50.5 है अक्टूबर 2023 में। और डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में 11% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर 2023 में। अब मैं अपने विपक्ष के सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है तो मानी हुई बात है अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा होगा, इसी कारण से यह दिखाई पड़ रहा है। सितंबर 2023 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.8% की ग्रोथ के साथ लगातार ग्रोथ कर रहा है, जो अगस्त के अनुसार, अगस्त की तुलना से अगर पूरे देखें तो विगत 14 महीनों में सबसे अधिक है। अब अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो अक्टूबर में 9.43% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा हुआ है, जो $62.26 बिलियन के आसपास पहुंचा है। सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट में हम 22% की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अक्टूबर 2023 का डाटा है। परंतु हम आए किस चुनौती से, यह भी ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती ये थी कि उस जमाने में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंकों को जो लोन दिए गए थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एनपीए 2014-15 के टाइम में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अब आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ भी आगे बढ़ रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं इस संदर्भ में एक कोट करना चाहता हूं। मान्यवर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार, बाद में हमारी सरकार में भी रहे, 2018 में अपने एक साक्षात्कार में रघुराम राजन जी ने कहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बॉम्ब ऑन मोदी वन रिजीम, इवन दो द राजन सेड दैट द लेंडिंग बैंक्स ऑफ 2006 to 8 was the origin of the bad loans which was in the यूपीए गवर्नमेंट। ये रघुराम राजन जी ने कहा कि 2006 से 8 के बीच में जो बैड लोन्स दिए गए उसके लिए भले ही आज, और ये नवंबर 2018 को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है, उसमें आया है। इसलिए हमने आज स्थिति ये की कि जन जन तक उस धन को पहुंचाया, उसको सुरक्षित किया और जन कल्याणकारी कार्यों में उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और आज आप देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्जित किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। यानी कहां वो बैड लोन्स में दबे जा रहे थे और कहां वो रिकॉर्ड प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जिसके बारे में भी मात्र चंद महीने पहले की तो बात है, जो कहा जाता था कि साहब ये खराब हो गया, डूब गया, वगैरह वगैरह, आज स्थिति यह है कि एसबीआई हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द इंडिया एंड एज पर द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2033-34 SBI has earned a profit of 18,537 crores। यानी ये जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों के हिसाब से ये सबसे अधिक आया है। और कहां हम कर्ज के अंधेरे में डूबे थे और आज मोदी जी ने उसे कर्ज के अंधेरे से निकालकर बैंकिंग व्यवस्था को जन कल्याण के सवेरे तक लाने में सफलता हासिल की है। और अगर हम पिछले समय में देखें तो ट्विन बैलेंस शीट जो बैंक्स एडॉप्ट करते थे वो अपने आप में एक समस्या थी, परंतु वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया उस कारण से अब ये ट्विन बैलेंस शीट एक नए समाधान के रूप में आगे बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो हम 2 लाख करोड़ रुपए के वर्थ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत 1500 से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का केंद्र बनता जा रहा है। नाउ मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल सर्विसेज, ये डेलॉयट ने 2003 में कहा है। और हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को रिपील किया।
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के कारण जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो समाप्त हुई। और जहां तक गरीबी और पॉवर्टी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, द रिलेटिव रिडक्शन फ्रॉम 2015-16 टू 2019-21 was faster. It is 11.9% year as compared to the previous time. यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद गरीबी उन्मूलन बहुत तेज गति से हुआ। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आईएमएफ का ये कहना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज मेंटेन्ड बिलो 1% इन 2022 बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यानी वो साफ मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई उस कारण से, जिसको हम गंभीर कहते हैं, गंभीर गरीबी कहते हैं, वो 1% से नीचे पे आई है। अब आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने अभी कहा है, एक साल पहले उन्होंने कहा, इंडिया डिजर्व टू बी कॉल्ड द ब्राइट स्पॉट एंड अदरवाइज द डार्क होरिजन बिकॉज इट हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम and most importantly this growth is underpinned by structural reforms। यानी आईएमएफ चीफ ये बात की तस्दीक कर रही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आधारभूत संरचनागत परिवर्तन हुए, उसी कारण से भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उसको देखते हुए भारत ने तुलनात्मक दृष्टि से महंगाई पर सबसे बेहतर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मिस्टर नोएल क्विन, हु इज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एचएसबीसी, और ये उन्होंने 2022 में कहा। मैंने इसीलिए सिर्फ वो बातें कोट करने का प्रयास किया जिनके के द्वारा ये समझा जा सके कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यह भी एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। मैं एक कोट करना चाहता हूं, एक नोबेल प्राइज विनर हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिज नेम इज माइकल स्पेंस, जिन्होंने 2022 में कहा, कोट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ रिजीम चेंज टुडे। इंडिया इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नाउ, इट्स अ पावर हाउस ऑफ डिजिटल एंड लाइफ साइंस realms, it is thriving digital ecosystem, and India is instead a digital system replacing existing retail systems. Entrepreneurs, companies, and are building solution to integrate existing and sometimes very small retail business into a digitally enabled supply chains, making them more effective। अर्थात विश्व का जो आधुनिक सप्लाई चेन व्यवस्था है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने एक बड़ा परिवर्तन लाने की स्थिति बनाई है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है, कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है। और इसके बावजूद आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो, उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है, उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर था मान्यवर
जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता, दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैवयोग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? ये सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है, एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। और यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उड़ रही, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो हम धनात धर्मात तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना, अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में, मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है, मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं,
बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कह के बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। श्री P. Chidambaram. Sir, 10 minutes. Thank you, sir. More than enough. Sir, after listening to the learned professor of Lucknow University, I'm sure that all of us are convinced that Amrit Kal has begun. And by going the number of times he was applauded by the Treasury benches, I think he should be in line for a ministership now. I wish him well. If all is well in the world and God is in his heaven and India is growing at the fastest rate in the world, why is the impact of that growth not felt on the ground? This is the question which my friend Derek asked, and I try to supplement that in the few minutes I have. We are a large economy. We are growing at the fastest rate in the world. We are innovative. We have the largest FDI coming into the country. But why is it not seen on the ground? And I specifically want to ask, why is it not seen in the inflation numbers and the unemployment numbers? Let's take only those two. Now, what are the unemployment numbers? And I'm going by official numbers. The government doesn't like the CMIE numbers, so we'll avoid the CMIE numbers. Mercifully, the BJP no longer talks about 2 crore jobs being created every year. Thank you for small mercies that you are not making these tall claims. That's one of the election jumlas. I didn't know the word jumla unless I heard it first from the Honorable Home Minister. Now let's focus on a few numbers. This is official numbers of the Periodic Labour Survey. The worker population rate in this country is 46%, which means the number of workers to the population is 46. It's quite low, but let's take it as acceptable given the various circumstances of the country. Of the worker population, that is 46% of the total population, male worker population is 69%, but the female is only 22%. Of the worker population, less than 50% actually work. So if you apply 50% on 46%, effectively it means only that 23% of the people work. This has more or less been constant in the last 9.5 years of the BJP government.
Now, why, I ask, if we have such scintillating growth, why is this numbers not improving? Now, my learned friend Derek O'Brien gave the numbers. In the age group 15 to 24, the unemployment rate is 23.22. Among graduates under the age of 25, the unemployment rate is 42%. Graduates between the year 25 to 29, it is still 23%. Graduates between the years of 30 to 34, it is close to 10%. It's 9.8%. A graduate in this country, and I spoke at a college, I said, I'm not frightening you, but you will graduate here. But unfortunately, 1 out of 4 will be unemployed. And even until the age of 35, 1 out of 10 will be unemployed. Why is this spirited growth, scintillating growth, not turning into jobs? That's the first question I'm asking. And keep in mind, most employment in this country is self-employment, 57%. Regular wage employees has declined from 24% to 21%. Apart from the quantity, the quality of employment is also poor. So I want the government to answer, why is this 10-year splendid period not reflecting in employment figures? The second one is about price rise. And on price rise, yes, inflation has come down in the last couple of months. I'm not disputing that. But please remember that even today, the CPI inflation is above the tolerance limit of 4 to 6% of the RBI. Food and light inflation is 4.3. Fuel and light inflation is 4.3. Food inflation is 9.2. What does the combination of high unemployment and high prices, what does it mean? It means that, and I think Derek hinted at that, it means that there is a cut, the impact will be felt in the cut in domestic consumption, cut in household consumption. The impact is you borrow more. Credit growth is driven in this country, according to the RBI, on personal loans and gold loans. The net financial assets of households has plummeted to the lowest level, 5.1%. What does this mean? It means that people are consuming less, people are borrowing more, they are liquidating their household assets and savings, and the net financial savings has come down to a historical low, a 50-year low of 5.1%. It also shows up elsewhere. It shows up, for example, in matters like child malnutrition. I'll just give you the numbers of child malnutrition, and are shocking numbers. They're shocking numbers of child malnutrition. Today, among children, you will find that 16.3% of children are undernourished, 19.3% of children are wasted, 35.5% of children are stunted. It shows up again in the food that the children get. And add to that Derek's numbers, under the age of 5, so many people die because of hunger. Why is it not showing up in consumption? It also shows up in education. Their mental growth. Today, in a class 8,
only 70% of the children can read a class 2 text. And only 45% of children can do basic arithmetic. In class 8, you can't do basic arithmetic, you can't read a class 2 text. So ultimately, the question is, who is this government for? Is it for the poor, or is its policy so skewed that it is favor of the rich? The numbers are undisputed. I have not seen a single government spokesman dispute these numbers. 23 crore people of India are poor when the poverty bar is very low. Poverty bar is 1,286 rupees per month per person in urban areas and 1,089 rupees per month per person in rural areas. With such a low poverty bar, 23 crore people are poor. And it shows up in inequality. The bottom 50% owns 3% of national wealth and gets 13% of the national income. And the top 5% owns 60% of national wealth, and top 1% holds 22% of the national income. So ultimately, this growth is unacceptable. This kind of growth is unacceptable. We need more balanced growth. But then I end with the final question that I've been asking the government for many, many months, for which I have not got an answer. I hope I will get an answer today. In 91-92, India's GDP was 25 lakh crore. In 12 years, in 2003-04, it doubled to 50 lakh crore, doubled. In 10 years, under UPA, it doubled to 100 lakh crore, 25 to 50 to 100. I ask one simple question. If you are growing at such a fast rate, such a record-breaking rate, will you 100 lakh crore? The finance minister, honorable finance minister knows the answer. I know the answer. You know the answer. But I want the honorable finance minister, to say the answer is known to the finance minister, the former finance minister. I'm out of it. Whether the GDP will double in their Amrit Kal period under the NDA government, will it grow to 200 lakh crore by March 2024? And I want the Honorable Finance Minister to answer that question. Thank you, sir. Dr. Kanimoji NVN Somu. Honorable Chairman, sir. 9 minutes. Yes, sir. Honorable Chairman, sir. I'm wondering the timing of the discussion on the economic situation in the country. In today's Hindu business headlines, we had a headline stating that Indian banks writes off rupees 10.6 lakh crore in 5 years, and 50% of that is being linked to the large corporates. This is how the corporates gets their freebies, is one thing which we have to make a note. India's DGP crosses $4 trillion for the first time. Sir, there is no doubt the Indian economy is growing. India is set to outspace Japan and Germany shortly as the fastest growing economy in the country. And the government also claims that the GST collections has touched a record high, but always Tamil Nadu has got the brunt of not getting it back what we give it to the Indian government. But the pertinent question of whether the fruits of the GDP growth has reached India's poor and lower middle class. No, the government has failed miserably in managing the economy. What is the use of boasting that India's foreign exchange reserves have increased? Indian economy grows faster than US economy with 7.6% GDP growth when 80% of the population is suffering in poverty. It's not a boon, it's a curse.
US is 37.5 trillion economy with a population of 33 crore, but India's population is 142 crores. In terms of per capita GDP, India ranks 139th in the world, and India's external debt is 172 lakh crores. India has witnessed a surge in private debt, especially in the corporate and the household sectors, due to the easy credit availability and low interest rate. During the UPA's 10-year rule, only rupees 2.20 lakh crore was written off. For a kind information, as of now, the Indian banks have written off as rupees 10.6 lakh crore in the 5 years. However, this also possesses a risk of default and financial instability, especially the income growth slows down, or 6% of national income in 2019, up from 37% in 1980. Similarly, the top 10% of wealth holders owned 77% of total wealth in 2019, up from 66% in 2000. High inequality can lead to social unrest, political instability, and lower economic growth. Unemployment rate has touched 10%. The unemployment of youth aged between 18 to 25 is touched abnormally low to 25%. Only a very small percentage of people are lucky to get a regular employment in government and private companies. Sir, more than 40 lakh government jobs are vacant, and the government has promised to create 2 crore new jobs every year, could not fill even 10 lakh vacant jobs. Too much emphasis on privatization of government and public sector companies will destroy the social structure of the country. The reservation system followed in our country is indispensable for upholding social justice and removing inequality. Reservations are not provided in any private sector, and if the governments keep on privatizing the reservation system, will derail, and the social justice and equitable distribution of wealth is under threat. Therefore, I urge the government to introduce a bill to provide reservation in the private sector before it sells everything. This government behaves like a good salesman, but not a good Samaritan. The economic disparity and the social inequality is witnessing a worst phase in independent India. When the world thrives on dollar economy, the continuous fall in the value of Indian rupee against US dollar can do a lot of bad than good. My senior colleagues in Treasury benches criticized vehemently the then government's failure to provide a stable rupee in 2013. You have promised to people of India that when you come to power, you will stabilize the value of Indian rupee against US dollar and bring the value of $1 US to rupees 40. What happened after your government captured the power in 2014 is a history known to everyone. Our Honorable Finance Minister has even said in public Indian rupee is falling, only US dollar is raising. This is a candid statement accepting the failure of the government to stabilize the value of Indian rupee against the US dollar. Due to the extreme rupee-dollar rate fluctuations, India's nominal GDP affects badly. The export gain is lost by a mile through import loss. The value of India's import is much higher than export. The widening gap in trade deficit is not good for any country. India is no exception. Our country's trade deficit with other countries, especially China, is going to affect the Indian economy very much. Too much dependence on imports from China will destroy the prospects of indigenous manufacturing and development. I think the warning bell is ringing. It's a wake-up call for the government to reduce the country's over-dependence on China in importing. Another time bomb of our country is facing at the moment is the escalating prices of the essential commodities and food items. The World Economic Forum predicts that the cost of living crisis sparkled by fluid and food price hikes will hit women the most. The rising prices have hit almost everyone, either it be a milkman, a fish vendor, an auto or a taxi driver, or the pensioners. All are affected very badly, but the union government is still having a blind eye to the precarious situation in the country right now it is in.
Transportation cost has gone up by 20 to 30% due to the steep hike in the prices of petrol, diesel and CNG. It is causing a ripple effect on the vegetable prices. The steep hike in the CNG prices had made life miserable for the auto and cab drivers. CNG is now sold over rupees 69 per kg. We demand the government should provide rupees 35 per kg subsidy on the CNG so that they can survive. The agriculture sector is the backbone of our country. Nearly 70% of the total population thrives on agriculture and agro-based activities. The government once claimed that it will double the farmers' income has done too little to save the life of the farmers of this country. The increasing incident of farmers committing suicide is a national shame. The government should address the needs of the farmers as a top priority because the whole country depends on them. If the government can't stop its farmers committing suicide, if the government can't uphold social justice and socio-economic equality, if the government cannot control the escalating prices of essential commodities, if the government can't provide employment opportunities for 1/3 of its youth population, if the government can't provide affordable health care to its poor citizens, there is no point in boasting that our country is fastest growing economy in the world. Sir, among the Indian states, Tamil Nadu is the second largest economy and third largest exporting state, contributing 9% to the India's net exports. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, the Industries Department of Government of Tamil Nadu is taking several proactive measures as several foreign companies interested in signing agreement with TIDCO, an industrial arm of the Government of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 179 projects at a cost of rupees 8.6 lakh crore relating to Tamil Nadu has been included in the National Infrastructure Pipeline. These projects will be implemented in the next 5 years. Thus, Tamil Nadu is emerging fast as a champion economy and advanced industrial state in the country. I urge the government to allocate adequate funds and to provide all necessary support to Tamil Nadu to release an unprecedented growth and pinnacle of success in economic growth, industrial development and employment generation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. Dr. Ashok Kumar Mittal ji, 9 minutes, 9 minutes. सभापति महोदय, आज मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक हलवाई का बेटा हूं, एक दुकानदार का बेटा हूं। तो मैं आज जो इस पर चर्चा करूंगा, एक अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं, एक आम आदमी पॉइंट के हिसाब से मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मुझसे पूर्व मेरे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ऊपर है, हमारा किसान खुशहाल है, युवा को रोजगार मिल रहा है और देश का विकास हो रहा है। लेकिन मैं वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को एक आम आदमी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा 4 पंक्तियों में। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं देश भर की अर्थव्यवस्था पर। हमें सिर्फ फिगर्स नहीं देखने, हमें फैक्ट्स भी देखने होंगे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि ये जाहिर करता है कि अभी तक 80 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर नहीं आ पाए कि उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। हम ग्रोथ को जीडीपी से एक्सप्लेन करते हैं, जीडीपी का, लेकिन एक आम आदमी का क्या मतलब जाता है? गैस, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इसी से उसका घर चलता है और इन सब की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमने G20 का बहुत सफल आयोजन किया, ये गर्व की बात है।
लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों में से 111वें नंबर पर आते हैं। भारत सरकार का मिशन है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व भी कम हो तो हम रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था जो भी मेरे हिसाब से 5 बुनियादी तत्वों से बनी है। सबसे पहले मैं दुकानदार भाई की बात करूंगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर दुकानदार परिवार है, 10 करोड़ से ऊपर। उनके साथ साथ मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगा, जो हमारी 10 करोड़ से ऊपर महिलाएं, बहनें, माताएं सेल्फ ग्रुप चलाती हैं, 20 करोड़। दूसरी तरफ यहाँ हम जाएं, चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, और वहाँ पर 90% वस्तुएं चाइना की बनी हुई बिकी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेक इन इंडिया में हम अभी तक क्यों पीछे हैं। सिंपल आंकड़े बताते हैं, भारत चाइना से 57.51 बिलियन का इंपोर्ट करता है, और सिर्फ डॉलर 57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, और सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे समझ नहीं आता ये हमारी कैसी आत्मनिर्भरता है। मल्टीनेशनल अमेज़न और दूसरी कंपनियों ने भारत में आके हमारे दुकानदार भाई, हमारे सेल्फ ग्रुप वालों का बुरी तरह से प्रॉब्लम में ला दिया है, क्योंकि यदि वो कोई भी सामान इनके थ्रू बेचते हैं तो 30% कमीशन हमें अमेज़न को देना जाता है, जो कि विदेशी कंपनियों के विदेशों में जाता है। हमारा दूसरा तत्व है किसान भाई। हमारे भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कर रही है और काफ़ी कुछ कर रही है, बट दूसरी तरफ अभी कल ही होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए, और उसमें भारत में पिछले वर्ष 2022 में 1 करोड़ 70 लाख सुसाइड हुए, जिसमें से 50 से 60 हज़ार किसान भाइयों के या हमारे मजदूर भाइयों के थे। वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों मजबूर हो रहे हैं? आउटस्टैंडिंग लोन्स, इन सब बातों की वजह से। और हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पर 74,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग लोन है। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। हमारा तीसरा तत्व है हमारे युवा। हम यंग युवा, हमारे यहाँ यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड लग रहा है कहीं हमें डेमोग्रेटिक डिसास्टर ना बन जाए। उनके लिए हम रोजगार के उतने अवसर पूरे नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, 8% हो गई है, और हमारे युवाओं को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और साथ साथ इसके हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब मैं चौथे तत्व पर आऊँगा, मजदूर वर्ग। देश की अर्थव्यवस्था का मूल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मजदूर भाई ही करते हैं। 2019 में मनरेगा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिसमें बताया गया कि 71% मजदूरों को कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 54% मजदूर भाइयों को पेड लीव नहीं मिलती, और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% और शहरों में 80% मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और हमारा पांचवा तत्व आएगा एमएसएमई या हमारे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। भारत सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, लेकिन हमारे कितने उद्योग बंद हुए? 19,000 से ऊपर एमएसएमई 2021 और से मार्च 2023 के बीच में बंद हुए हैं, जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा मंत्री महोदय ध्यान दें, और कुछ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा देश एक महान देश है, हम में क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन सकें। तो
तो इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें, कृषि को सोशल सर्विस ना बनाएं, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे उसको हम आत्मनिर्भरता भी किसानों में पैदा करें। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आएगा किसान भाइयों को के लिए एमएसपी गारंटी के लिए सरकार कानून बनाए और उनको प्रॉफिटेबल बनाए और उनको सस्टेनेबल बनाए। दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। एक ज़माने में हम सुपर पावर कहते थे, हमने तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को दिए, जबकि दुनिया में विश्वविद्यालय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा सिर्फ एजुकेशन पर खर्चा 2.8% है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 5% किया जाए जीडीपी का। बाकी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, उसमें यदि मैं चाहूँगा सरकार जो कैसे उसको डिवाइड कर सकती है अमीरों और गरीबों में, सो दैट जो सभी वर्ग को पूरा जो देश की तरक्की का पूरा हिस्सा मिल सके। और अगली बात मैं चाहूँगा अपने दुकानदार भाइयों के लिए कि सरकार उनके लिए कानून लाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल और अन्य तरीके से हम उनकी सहायता दे सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा कि सरकारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े भ्रमित हैं, ये दावे किताबी हैं, बड़ी है दूरियां अब तक अमीर और गरीब में, किसी के कुत्ते पर रेशमी चादर, कोई बिन कपड़े बेहाल है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, माननीय सुजीत कुमार। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to congratulate our countrymen because recently we reached the $4 trillion economy benchmark for the first time. And sir, we have become, it's well known that we have become the third largest economy by purchasing power parity index and the fifth largest economy by market exchange rate. Sir, we have amply demonstrated to the world our inherent strength facing the twin challenges of the Russia-Ukraine conflict and also the COVID challenges. Sir, we are all set to achieve between 6.2 to 6.5, 6.8, we can debate on the numbers, but very healthy growth numbers in FY 23-24. Fastest growing economy, many speakers have already spoken about it. We are the fastest growing large economy in the world. And sir, we also are very likely to become a $5 trillion economy by 2027. And sir, if the dots are connected well, the economic dots are connected well, then we, by the end of the Amrit Kal, by the end of 2047, we will be a developed economy as well. Sir, now this is possible, sir, if, as I said, we connect all the economic dots properly. But in my view, sir, there are three things that the government needs to focus on to achieve these goals and the vision. Sir, first and foremost, fulfilling the aspirations of our citizens, particularly our youth and women, and I'll elaborate on it at length. Secondly, sir, boosting the MSMEs. Sir, today, Honorable Member Lakshmikant Bajpayee also during 0 hour spoke about the need to protect and support our MSMEs. And sir, I'll second him. I cannot agree with him anymore. Sir, we need to strongly boost our MSMEs and give impetus to our job creation and entrepreneurship. And third and foremost, sir, is the need to focus on education, innovation, and R&D. Sir, in her budget speech, Honorable Finance Minister also gave priorities to these three areas that I have just referred to. But, sir, I do find some lacuna, and I'll talk about it, sir. So let me go to the economic empowerment of our youth and our women. Sir, the Honorable Prime Minister spoke of 4 castes recently during one of the election speeches. He spoke of youth, women, farmers, and the youth, and the poor, sorry. Sir, let's come to the youth. We are the most youthful nation in the world. 2/3 of our population is under 35. Half of our population is under 25. When Honorable Member Ashok Mittal was speaking about the demographic dividend turning into demographic disaster, so that's a reality. That's a genuine concern that we have today. We need to take care of our youth, job creation, unless we want to see a demographic disaster. So talking of
empowerment of women, sir, female worker population ratio is only 22%, which Honorable Member Chidambaram was talking about. Sir, I would like to refer to a model of women empowerment from my state of Odisha, sir, where 70 lakh women have been economically empowered over the years, and the self-help groups that they were part of are now becoming SMEs, small and medium enterprises. So this is a verifiable model of economic empowerment for women, which I think can really help us to achieve our economic goals. Thirdly, sir, doubling farmers' income. Sir, the government had spoken about doubling farmers' income by 2022. It has not happened. Sir, in Odisha, we have already doubled farmers' income a couple of years ago. In fact, we have received the Krishi Karman Award many times by Government of India, which showcases the importance and impetus that we have given to farmers. And sir, talking of inclusive growth, sir, there was a wide gap between the per capita income, national per capita income, and the state's per capita income in the year 2020-21. Today, sir, that has been drastically gapped. The gap has been drastically bridged. And today, sir, we are almost at par with the national per capita income. And sir, I'll give you statistics. Sir, the development expenditure of Odisha has increased more than 20 times over the last 20 years. Sir, more than 20 times over 2 decades. This is a huge humongous spend on development expenditure, which is shown in all our indicators and parameters. Sir, I'll come to the focus on education, innovation, R&D. Sir, way back in the 60s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. We are nowhere close, sir, today. Sir, I will compliment the government of the day, and particularly Honorable Education Minister, that in this year's budget, the budget estimate of education is 1,13,000 crore roughly, which is 13% increase over the revised estimate of 22-23. Definitely, sir, this is the highest increase in outlay in expenditure over the RE of the previous year. But, sir, it's still not enough. It's only 2.8% of the budget, of our union budget. In contrast, sir, in Odisha, 30,000 crore has been earmarked for education in this year's budget, which is 12.3% of the total budget outlay of the state. 12.3% of the total budget outlay of the state is for education, sir. Sir, I think inspiration can be drawn by union government from Odisha on this. Sir, I'm extremely passionate about education, but I was sorry and sad to note that in her budget speech, the Honorable Finance Minister spoke about 7 priorities, what she called Saptarishis. But education was not one of the priorities or Saptarishis. And we all know, sir, the foundation of any nation is education. No nation can progress economically, socially, or otherwise without focusing on education. So this is why I urge again the government to focus on education. Sir, I'll come to PM Poshan. Sir, Honorable Member Chidambaram ji spoke about, sir, child malnutrition. He gave some numbers, 16% undernourished, 35% stunted. These are numbers. Sir, again, I'm sad to note that the budget estimate for 23-24 for PM Poshan is 9% less than the RE, the revised estimate of 22-23. Sir, this will definitely reflect in poor learning outcomes and educational outcomes. Sir, I'll come to, sir, R&D. Sir, Honorable PM has often spoken about India becoming a $1 trillion digital economy, which will be roughly 20% of our economy when we become a $5 trillion economy. But, sir, tell me, sir, which nation can become a digital economy without focusing on R&D? And today we spend only 0.7% of our GDP on R&D. Comparable numbers, sir, Israel 4.9, US 4.5, sorry, US 3, South Korea 4.5, China roughly 2, we are only at 0.7. Sir, I compliment the government. I laud them because they brought in the Anusandhan National Research Foundation bill. And Prime Minister has often spoken about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. But, sir, we need to really focus on Anusandhan or research if we want to become a developed economy in the next couple of decades, at least. And, sir, finally, sir, I'll come to the focus on MSMEs. Sir, we are growing, no doubt, but it is not a job-led growth. Sir, I'm afraid that is becoming a jobless growth. Sir, that is because, sir, our focus on MSMEs is not to the extent what it should be. Sir, today MSMEs are crying for capital. They do not have access to capital. Sir, there are statistics, sir, that if the loan amount is less than 1 crore, then the default is roughly 1%.
But if the loan amount is more than 100 crores, then the default is over 40%, sir. So who takes loans over 100 crores? It's the large enterprises. But the MSMEs take loan less than 1 crore and their default rate is less than 1%. But still, sir, we have not done justice to our MSMEs by giving them access to capital, by giving them access to technology. So, sir, I'll again urge the government, sir, MSMEs are the job creators of our country. They create wealth for the nation. They contribute 30% to our GDP. Sir, they roughly create 123 million jobs. Sir, that is roughly 12 crore jobs. Still, we are neglecting our MSMEs. Sir, if we have to really focus on the economy, then we need to focus on the MSMEs because, sir, and sir, finally, sir, since you have, sir, since my time is over, sir, I'll just conclude by saying that, sir, India, that is Bharat, is a union of states. So if we have to grow socially and economically, then we need to take the states along. And this is why, sir, my Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, has always believed in the philosophy of cooperative federalism. Sir, for him, empowering the 4.5 crore Odias socially and economically has been his highest duty. And this is why, sir, he has been appealing in various forums through the parliament and otherwise that, sir, we need support from the government of India to better our tele density, to better our railway density, to have, sir, more funds which we are Please conclude. Please conclude. Sir, I'm concluding, sir. So this is what. Sir, the Honorable PM has spoken about Purvodaya, which is the rise of the East. Sir, how can we have Purvodaya unless, sir, states like Odisha are supported economically by Government of India by, sir, giving us the funds that are due to us, by, sir, giving us the tele-density, the highways, the banking facilities that we, sir, badly need. Thank you. Manni Sri V. Vijay Sai Reddy ji. Deputy Chairman, sir, thank you very much. And I also thank my party president and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me an opportunity to speak on this particular subject, sir. Sir, for the last 10 years, India has been on the brink of massive economic transformation, which the opposition is not in a position to realize. Sir, for the last 10 years, again, we have grown from being 10th highest GDP to 5th highest GDP in the world, which my colleague, Honorable former Finance Minister Chidambaram couldn't realize it. Sir, in the next 5 years, under the leadership of Modi ji, we are poised to become third largest economy in the world, crossing 5 trillion mark. Please, Mani Jairam ji, baith kar baat nahi. Please, you speak to the chair. Sir, Deputy Chairman, sir, India continues to retain its fast-growing economy status even in the face of global economic slowdown. And we have faced the COVID situation. Even during COVID situation, there is no economic stride, and it continues to grow in the economy. Sir, last year, our GDP growth stood at massive 7.2%, which was twice the average of emerging market economies. And our Honorable former Finance Minister extensively spoke about the GDP. And he was all along talking negative about the GDP, and he couldn't realize that there is a growth. And currently, we have surpassed the market expectations and registered a 7.6% growth during second quarter of the this current 2023-24. Sir, and coming to the tax collections, which the opposition has to realize the importance. There is a significant growth in the tax collections that has become the norm, and this has fueled the economic growth, sir. Sir, within 10 years, the direct tax collections have increased by 160%, and from 6.4 lakh crore in 2013-14 to 16.6 lakh crore in financial year 2022-23. Sir, this year, this 6 months from April to September, tax collections increased by 18%. Sir, till now, the GST collections, now up to this direct taxes and then indirect taxes, till now, GST collections for this financial year stands at 13.3 lakhs,
crore, averaging 1.66 lakh crore monthly. This is whopping 12% hike over the last year. The increase in tax collections without substantial tax hikes goes to show that the government efficiency in improving our tax compliance and expanding the tax base. Sir, even there is no applaud from the Treasury benches. Opposition, I'm very sure they will not applaud. Sir, coming to the digital payments. India continues to dominate the digital payment landscape. Sir, we recorded 89 million digital transactions in 2022, which is more than 4 leading countries combined together. Sir, this accounted almost half of the global real-time payments. And sir, and I also should, up to this, it's all positive points, sir. From now, I have to tell the negative points also, and at least to satisfy my friend Jairam Ramesh. Sir, we must not be complacent with our achievements. And sir, many issues continue to hinder the India's economic growth, sir. Sir, the first I would like to point out among the negatives is depreciating rupee, which is very, very alarming. Sir, rupee was worst performing Asian currency in 2022. Sir, for the first time ever, the value of rupee crossed 80 against the dollar. Currently, it stands at 83.4, which is very, very alarming. Sir, it is successively, the rupee is depreciating year after year from minus 8.5% in 2018 and minus 10% in 2022. Sir, depreciation of rupee has got a significant impact on the overall development of the country, sir. Sir, depreciation of rupee has a direct impact on the manufacturing sector since India is a net importer of raw materials and fuel. These two are very important import because we completely depend on the fuel import, sir. Manufacturing growth has already started showing the signs of stress and has slowed significantly this fiscal year. Sir, as per RBI, every 5% fall in the value of a rupee, inflation increases by 15%, 15 basis points, that is 0.15%. Sir, foreign investors, this has another effect of depreciating the rupee, sir. Foreign investors have pulled out 18 billion from Indian markets, more than 12 billion sell-off during 2008 global recessions. Sir, the next issue which I would like to bring to your kind notice is the reality remains that top 10% of the Indian population holds more than 60% of the country's wealth, while the bottom 15% of the population has only 6% of the wealth, sir. Even though the per capita income has more than doubled, that is 1.97 lakh since 2014, India ranks 142nd among 197 countries in terms of per capita income. The last point, sir, which I would like to bring to your notice is widening widening trade deficit, which is again alarming. Sir, India's overall trade deficit reached 122 billion in financial year 2022-23 compared to $82 billion in the previous year. So the government data indicates that India's trade deficit hit a record high in the month of October, and more alarming is, all the more concerning is India's widening trade deficit with China, and historical high of 83 billion in 2022, and is expected to cross 100 billion mark in 2023 only towards China, sir, from China. Sir, in conclusion, we cannot afford to be complacent, and we should take the necessary steps. I request the Honorable Finance Minister, though there are positive aspects, there are also negative aspects in this economic growth. So I request the Honorable Finance Minister to address all these issues and make the economy more strengthened. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, माननीय V. विजय साई रेड्डी जी. माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी. माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज सुबह जब पता चला कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी पूरी बातचीत टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और वगैरह वगैरह की चीज़ों में रहेगी। अर्थव्यवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं सिर्फ, और हाँ बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे तालियां बज रही थी सत्ता पक्ष से, बजती भी हैं। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं? सर कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल स्वाति नारायण की। बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ। मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी पुनः ले जाऊंगा 14 में बिहार गए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना। सर बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष। बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है, नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी। और ये पुरानी बात है सर, एफडीआई को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए। जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी जी ने की, आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए। उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसको डिनाइल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है तो कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं है, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है,
ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का, हमें एड्रेस करना होगा। आपको असल में लग गया सर, बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ। सर, आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। वेल्थ टैक्स को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर मैंने कहा, वेल्थ टैक्स 16 में आपने अबॉलिश कर दिया। किसानों के बारे में सर मैं कहता हूं, आप कहते हैं शेयर बाजार उछल रहा है, बड़ी तारीफ होती है सर। शेयर बाजार उछले और एक किसान आत्महत्या कर ले, एक युवा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, तो आप किस चीज को कहेंगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहता, हाशिए के समूहों में पॉवर्टी की जो परिस्थिति है, आप बिहार का डेटा देखिए। आखिरी सर, एक सुधांशु जी बड़ी अच्छी चीजें बता गए, हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशानी है गरीबी से, भुखमरी से। 30 सेकंड सर। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर्ग को कहता हूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? जय हिंद सर। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय श्री एलामारम करीम जी। Thank you, sir. The real state of our economy concerning around the people will be clearly understood by the latest RBI report, which says the household's financial assets, including bank deposits and cash equity investment, fell down sharply to 5.1% of the GDP in the fiscal year ended in the March 2023. See, on the other hand, the household debt increased 5.8% of the GDP in the financial year 2023, which is the second highest annual increase since independence. Recent RBI data also reveals that bank, financial institution credit to institutions bar business marked a decline, while personal loan portfolio has increased in volume during in the current quarter, which clearly signals further slowing down of the economy along with the rise in the people's indebtedness and resulted distress. Sir, in addition to these technical issues, there are broader concerns about the overall economic direction of the country. Tax concession and incentives are given to the rich corporates, are widening the gap between the two Indias, the rich and the poor. Real income of the top 1%, the cronies of Modi government, rose by 30% from 7.9 lakh crores in 2019 to 10.2 lakh crores in 2022. While the real income of the lowest 25%, who are shouting slogans for you, by the 11% from rupees 3.8 lakh crores to 3.4 lakh crores. Sir, a relentless propaganda continues to boost the Indian economy's resurgence. The recent G20 summit was used to project India as an emerging economic powerhouse in the world. But the truth is that India has the lowest per capita GDP among the G20 countries. That was hidden. Ranks the lowest in terms of human development indices and records the lowest labor force participation rate, Chidambaram told you, reflecting the very high level of unemployment. The continued decline in the people's purchasing power is impeding the economic growth as this leading declining levels of domestic demand. This in turn leads to declining levels of investments. This means potentially further declining levels of employment guarantee. New proposals for investment in the economy have rapidly declined. Over the last year, 72.5% in government sector and 79% in private investments. Sir, massive propaganda
bliss is launched over the grand success of Make in India. That was the slogan from 2014. Its target for manufacturing sector growth over this decade was 12.14%. The reality is that since 2013-14, this averaged only 5.9% per annum. The tall claim, where it has gone? The share of the manufacturing GDP was targeted to reach 25%. This, however, remained stagnant at around 16.4%. But when 2011 and 11-12 and 21-22, jobs in manufacturing sector declined from 12.6% to 11.6%. I am concluding, sir. Deepening rural distress is reflected in the demand for jobs under MNREGS. Last year, this grew by 15.3%, and compared to 2019-20, this grew by 29.4%. But unluckily, the allocation for MNREGS drastically cut down in the last budget. Fresh evidence that have emerged about the Adani Group manipulation, that is also a part of this economic policy. Manipulation of stock prices of its companies calls for a serious probe. The final Financial Times and Guardian already have time based is on over. inputs from the organized crime and Alarm corruption. Karim 1 ji, minute. your time is over already. A report project revealed Please how conclude. to close associates of such companies. Conclude, please. And buy millions of dollars of shares in Adani companies. Thank Sir, you. these are the affairs of the Indian economy. The tall claim has no truth. I conclude with this. Thank you. Manya Shri Anil Prasad Hegde ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. When we are crossing a river in a boat, if there is a hole in the boat and the water starts trickling in, taking a mug or a tumbler and pouring the water out of the boat is not the solution, sir. Plugging the hole needs to be the solution. Sir, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी के बारे में आंकड़ा बहुत सारे हैं. Important thing is plugging the hole, sir. I want to give you two, three examples. Most of my life, I was opposing the Congress policies, being in the Janata Party, Janata Dal Parivar, and later being part of the NDA. But I want to point out to you, sir, in 1985, the then government of Rajiv Gandhi had launched the oil seed technology mission, because of which by 1993-94, we were almost self-sufficient in edible oil. Subsequently, governments started reducing import tariffs, as a result of which cheap edible oil started flooding the Indian market, and India became dependent on import of edible oil, sir. Sir, this has become a pretext for the government to give permission to genetically modified mustard. So giving permission to GM crops is not plugging the hole, sir. Sir, इसी सदन में कल 6 दिसंबर है. 6 दिसंबर 2012 को तत्कालीन लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्टी ब्रांड रिटेल के डिबेट के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश से चीप गुड्स भारत आने के बारे में उन्होंने कहा था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने कहा था. अभी यहाँ पर साथी अशोक मित्तल और कन्नीमोली जी भी चाइना के बारे में जिक्र कर रहे थे. My information, sir, is that millions of people, including Falun Dafa practitioners, Uyghur Muslims in Xinjiang, are subjected to forced labor in Chinese prisons. And because of the violation of human rights, labor laws, and environment laws, our neighbor is able to manufacture cheap goods, which makes us less competitive. Illegal organ trade of innocent prisoners like Falun Dafa, Uyghur Muslims are flourishing business there. So long as we do not plug the hole by starting a campaign to stop
human rights violation, labor law violation, environment law violation inside China, I feel it is difficult for India's manufacturing sector to improve. Sir, finally, देश में जातियां हार्ड रियलिटी है सर. देश में कई सारे पिछड़ी जातियों को आरक्षण के बावजूद विकास का फायदा पहुंचा नहीं है. इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व का मेरा पार्टी के सरकार बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस लागू किया है. जब तक देश में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते हैं तब तक सरकार का बनाया हुआ पॉलिसीज का फायदा कई सारे जातियों को नहीं पहुंचेगी. सर, hence, by ordering a caste-based census, we need to plug the hole. And finally, sir, I also request the government to give special status to Bihar. Thank you. Thank you. धन्यवाद माननीय अनिल हेगड़े जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. Yes, sir. Thank you very much. 3 minutes, sir. The occasion to talk. Mr. Chidambaram, from Chidambaram to all opposition parties were telling about the gravity of our Indian economy, how it is going on. No doubt, as our comrades tells, this our GDP is grown to the level which we never expected. Ultimately, the GDP per person, where it is, that was the only question I want to ask to the government of India. There are a lot of abhayans. Prime Minister ka naam hai, this name, that name, and removed all the other name. But ultimately, it is getting to the really needy people. I am working on, mainly on tribal areas. There, a lot of projects are there, lot of money also there. But it is not coming down because of a lot of hurdles. In the same way, Indian economy, everybody is saying that, okay, we are this level, that level, but our Vijay Reddy, lately he came to the point. Before he has to. It is compulsion, not because of his intention. Compulsion, they have to have this one, this stand. Almost all parties, everybody is threatened. But what our government is saying, okay, semi-final over. All the 10 matches in, you see this one, Indian matches against the World Cup, everything we gave with, but at last what happened in Ahmedabad Modi Stadium? He was there with the blue jackets, our Prime Minister. We are also behind him. What happened? That is what going to happen in 2024. This not be a hat-trick. Unless and until, maybe they can win, unless and until, they have to see the real problem. Not this $1 trillion. It is coming to, most of the money is coming to me also, just like me people, little, 1 or 5%, including that one maybe. But it is not going to the real people. That 80 crores. Our Manoj was telling clearly. So please spend some money or get some money from wherever it is and pump to the, in Manrega or whatever it is, which is helping people, real people, not the big corporates. I know when I am starting, if I am telling Adani, you will put the bill. Stop. Everybody is telling about Adani or other, then it is, time is over. I hope, I don't know. Now, just... Yes, your time is over. 3 minutes already. Okay. That is the thing. 3 minutes. When we are telling about the real point, it will be coming. Anyway, everybody, you are giving 1 minute. Give me that 1 minute, just a minute only. Please, because my request is, whatever our comrades say, this much crores and all, our Tamil Nadu people asking 5,000 crores only because of flood, that situation. But Kerala government, the dues in different areas is more than 5,000 crores. Release something, some little thing. That is where my request. Thank you very much. Thank you, Abdul Bahar. And for the great performance of Thank you, Manni Sri Sushil Kumar Modi ji. 20 मिनट समय है आपके पास.
माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति पर बोलने के लिए मैं पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। महोदय, अभी चिदम्बरम साहब भाषण कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि ग्रोथ इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द ग्राउंड, इज नॉट सीन ऑन द ग्राउंड। मुझे पता नहीं किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो। अभी अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, तो ग्रोथ अगर वहाँ जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता तो फिर जीते कैसे, फिर परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आया। तो ग्रोथ देखने के लिए भी चश्मा चाहिए। अगर टीन का चश्मा लगा लेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अगर पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगा। और सती महोदय, ये जो दूसरी तिमाही है 23-24 की दूसरी तिमाही, आरबीआई से लेकर देश के तमाम जो अर्थशास्त्री थे उनका आकलन फेल कर गया। यहाँ तक कि आरबीआई ने भी कहा कि 6.5% ग्रोथ होगा, और हुआ कितना? 7.6% ग्रोथ दूसरी तिमाही के अंदर इस देश के अंदर हुआ है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा, ये जो 23-24 की दूसरी तिमाही है उसमें यूके का ग्रोथ कितना है? 0.6%, चाइना का ग्रोथ 4.9, अमेरिका का 5.2, रशिया का 5.5 और भारत का ग्रोथ है 7.6। और इसलिए आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला विकास दर वाला देश है। सभापति महोदय, महंगाई पर बार बार चर्चा हो रही है। अगर लोग इतने ही दुखी होते, इतने ही नाराज होते, तो फिर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा। और इस देश में कितने प्रदर्शन हुए? सभापति महोदय, दुनिया के 50 देशों में लाखों लोग सड़कों पर आ गए पेट्रोल डीजल की महंगाई, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई के विरोध में। लेकिन भारत में 10,000 लोग भी कहीं सड़कों पर नहीं आए। क्यों नहीं आए? महंगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन कारकों की महंगाई नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम है कि महंगाई का कारण नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है, कोविड कारण है, रूस यूक्रेन युद्ध कारण है, और दुनिया के तमाम देश महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और सभापति महोदय, 4 चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई का असर दिखाई पड़ता है। पहला पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा एडिबल ऑयल खाद्य तेल, तीसरा फर्टिलाइज़र और चौथा दाल। सभापति महोदय, इन चारों में से कोई भी चीज़ हम भारत में पैदा नहीं करते हैं पूरे तौर पर। पेट्रोलियम पदार्थ 85% इंपोर्ट करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी तो भारत में बढ़ने से हम कैसे रोक पाएंगे? एडिबल ऑयल, दुनिया के बाकी देश से ये खाद्य तेल नहीं खाते, केवल भारत के लोग खाते हैं। और 60% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र, 60% फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। दाल, अमेरिका के लोग दाल नहीं खाते हैं, फ्रांस और जर्मनी के लोग दाल नहीं खाते, दाल खाता है भारत, और पैदा करता है म्यांमार। और दाल भी हमको और आयात करना पड़ता है। क्योंकि पौधे में सबसे पहले पेट्रोलियम डीजल के बारे में इस सदन को बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में पिछले 2 वर्षों में सितंबर 21 से लेकर सितंबर 23 का आंकड़ा मेरे पास है, पेट्रोलियम के दामों में कितनी वृद्धि हुई? 61%। पाकिस्तान में कितनी वृद्धि हुई? 60.68%। छोड़ दीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश की बात। अमेरिका में कितनी वृद्धि हुई पेट्रोल के दामों में? 46.31%। जर्मनी में 19.41, फ्रांस में 26.47, स्पेन में 24.92, इटली में 24.27। इंग्लैंड के अंदर पेट्रोल के दामों में 2 साल में 15% की वृद्धि हुई। और सदन को शायद ज्ञात नहीं होगा कि भारत में पिछले 2 वर्षों के अंदर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 4.56% की घटोतरी हुई है, यानी निगेटिव ग्रोथ हुआ है। यानी जहां सितंबर में
101 रुपया 34 पैसा पेट्रोल का दाम था, वहाँ 2023 में घटकर 96.72 हो गया। और साथी महोदय, उसी प्रकार डीजल, श्रीलंका में 115% और की वृद्धि हुई है डीजल के दामों में, पाकिस्तान में 67, फिर अमेरिका 48.68, जर्मनी 31.46, स्पेन, इटली, यूके में उस आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। और भारत में डीजल के दाम में 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई? केवल 0.96%, यानी केवल 1% की वृद्धि हुई। और आप कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ गया। और ये आंकड़े आप चाहे तो इन आंकड़ों को वेरीफाई कर लें। और सती महोदय, भारत सरकार ने 2 बार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया और कुल मिलाकर 2 बार में 13 रुपया पेट्रोल पर और 16 रुपया डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। और पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोई बता दे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भारत के अंदर कोई वृद्धि हुई है क्या? और सती महोदय, यहाँ भी राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या वैट को घटाने का काम किया, लेकिन जो विपक्ष के राज्य थे उन्होंने घटाने के बजाय बढ़ाने का काम किया। और उसका भी मैं आंकड़ा देना चाहूँगा सती महोदय। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ है, गांधीनगर में पेट्रोल 96 रुपया 63 पैसा और जयपुर में पेट्रोल 108 रुपया 45 पैसा, यानी 12% ज़्यादा है गांधीनगर से जयपुर में पेट्रोल का दाम। गुवाहाटी में 98 रुपया गुवाहाटी में, और डायरेक्ट साहब के कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपया 42 पैसा। तो अगर केंद्र के कारण का बढ़ा होता तो आखिर कलकत्ते में 106 रुपया और गुवाहाटी में 98 रुपया क्यों है? लखनऊ में 96 रुपया और बेंगलोर में 101 रुपया, गोवा में 97 रुपया, रायपुर में 102 रुपया, भोपाल में 108 रुपया और अमरावती में 111 रुपया। श्री महोदय, कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की और बीजेपी शासित राज्यों ने उसके दाम में कटौती की। और जब बात आती है एलपीजी की, तो सदन को ये मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी के दामों में और जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलता था उसमें कुल मिलाकर 300 रुपये की राहत दी है और सामान्य कंज्यूमर को 200 रुपये की राहत दी है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 28,000 करोड़ का, और भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया उनको पिछले साल देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम किया है। सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पेट्रोल में ब्लेंडिंग, ये जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, ये जब 14 में नरेंद्र मोदी जी आए, इस समय 1.53% पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। आज कितनी ब्लेंडिंग हो रही है? 12%। और इससे देश को कितना फायदा हुआ? विदेशी मुद्रा 73,000 करोड़, डायरेक्ट साहब 70,000, द कंट्री हैज सेव्ड 73,000 करोड़ एज अ फॉरेन एक्सचेंज सेविंग। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 402 लाख मैट्रिक टन एमिशन कम हुआ। अमाउंट पेड टू द डिस्टिलरीज 1,26,000 करोड़, और फार्मर्स को कितना मिला? 76,000 करोड़ रुपया और किसानों को मिला है। सती महोदय, ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सती महोदय, आप कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि उसी प्रकार फर्टिलाइजर, सती महोदय, फर्टिलाइजर भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ की सब्सिडी का अपने बजट में और प्रोविज़न किया, 3,70,000 करोड़। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जो फर्टिलाइज़र का जो रॉ मटेरियल है और फर्टिलाइज़र, ये बाहर से आता, भारत के अंदर केवल 40% तैयार होता है, बाकी बाहर से आता है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूरिया के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया का दाम है
2450 और किसानों को कितने में मिलता है? 266 रुपये में किसानों को मिलता है। The government of India is providing a subsidy of 2,183 per bag to the farmers in this country. DAP में सब्सिडी कितनी मिल रही है? 2,501 रुपया। NPK में सब्सिडी कितनी? 1,918। और आपने सारे कारखाने बंद कर दिया। गोरखपुर का खाद का कारखाना नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया, बरौनी का खाद का कारखाना हमारी सरकार ने चालू किया। और सती महोदय, अभी कह रहे थे कि करोड़पति बन गए। ये बात ठीक है कि हमारे करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, चोरी करके कोई करोड़पति न बने। और ठीक है डायरेक्ट साहब, in 1617 there were only 68,263 crorepati in this country. Now the figure has gone to 1,69,000. तो जो टैक्स पेयर है, जो 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी अर्निंग है, जो टैक्स देते हैं, उनकी संख्या 68,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गई। ये तो खुशी होना चाहिए कि आप दुखी है कि करोड़पति क्यों हो गए। तो सब लोग कंगाल बना दीजिए, सब लोग कंगाल हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सदन को बताना चाहूँगा, ये नरेंद्र मोदी जिनके कारण 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए। पिछले उनके पहले कार्यकाल में, दीदी थोड़ा 1 मिनट, उनके पहले कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए और मिडिल क्लास में शामिल हो गए। सती महोदय, 15-16 में इस देश में 24.85% गरीब थे और 19 और 21 में घटकर कितना हो गया? 15%। तो आखिर गरीब कहाँ चले? गरीब देव इंटर ये मिडिल क्लास। और सती महोदय, और यूएनडीपी की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि 2005-06 में 64.5 करोड़ गरीब थे इस देश के अंदर, 64.5 करोड़, और 2021 में घटकर हो गए 23 करोड़। 15 साल में इस देश के अंदर 41 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए और वो मिडिल क्लास में प्रवेश कर गए। तो सती महोदय, एक और हमने जहाँ गरीबों का ख्याल रखा, वहाँ पर यहाँ पर लोग उद्योगों के माध्यम से पैसा कमाएं, इसका भी ध्यान रखा है। और सती महोदय, अभी बैंकों की बात हो रही थी, और कि बैंकों का एनपीए की क्या स्थिति है। बैंक का प्रॉफिट 22-23 में पहली बार बैंकों का प्रॉफिट, दे हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख करोड़। नॉट अ सिंगल बैंक इज इन रेड, दे आर अर्निंग प्रॉफिट। ये आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? 22-23 में क्यों 1 लाख करोड़ का 22-23 में बैंकों को प्रॉफिट हुआ है? और भारत सरकार ने जो कैपिटलाइज करते थे, बैंकों को पैसा देना बंद कर दिया। 3 साल से 1 पैसा नहीं दिया बैंकों को। और बैंक अपने बलबूते जो हैं, और जो एनपीए हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो 11.2 था 17-18 में घटकर 5.2% हो गया। तो सती महोदय, ये जो एनपीए अगर कम हुआ है तो इसका कारण क्या है? सती महोदय, जीएसटी का कलेक्शन, 1 साल में 6 बार जीएसटी का कलेक्शन, दैट इज क्रॉस 1,60,000। जो लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं जीएसटी को, तो अगर हिम्मत है तो अपने राज्य हिमाचल में और जहां आपकी सरकार कर्नाटक में जीएसटी को हटा दीजिए। अगर वो गब्बर सिंह टैक्स है तो जीएसटी के कारण 1,60,000 करोड़ का कलेक्शन 1 साल में 1 बार नहीं बल्कि 6 बार इस 1 साल के अंदर हो चुका है। और सती महोदय, एक समय था कि मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि आज 99% मोबाइल मेड इन इंडिया है। हमने मोबाइल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और इस साल 11 बिलियन का मतलब हो गया 88,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन जो है, और हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया है। सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय भारत
दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 10th इकोनॉमी थी दुनिया की 2014 में, और सेकेंड टर्म में वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उन्होंने देश की जनता को गारंटी दिया, मोदी की गारंटी, कि तीसरे टर्म में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हम जर्मनी को पीछे छोड़कर हम 2 साल में 4th हो जाएंगे, और फिर जापान को पीछे छोड़कर 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और सभापति महोदय, केवल हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, 27-28 तक भारत 3rd लार्जेस्ट केवल जीडीपी में नहीं बनेगा, बल्कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी बदल जाएगा। हमारा सपना है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सके, एक एडवांस इकोनॉमी बन सके, और उसी दिशा के अंदर भारत की सरकार काम कर रही है। और इसलिए सभापति महोदय, हम लोगों ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। अभी जो आंकड़े आए अक्टूबर के, वो 4.87, आरबीआई का 4 +2 का जो रेंज है, अक्टूबर 2023 में वो आंकड़ा 4.87 का है। तो हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। और जहाँ तक खाद्य तेल की बात है, खाद्य तेल पिछले 1 साल में उसके दाम में 18% की गिरावट है, मस्टर्ड ऑयल में, वनस्पति में 12% की गिरावट है, सोया में 20%, पाम ऑयल में 15%। यद्यपि ये खाद्य तेल भारत में पैदा नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने और उसके अंदर भी उसको भी और नियंत्रित करके दिखाया है। और सभापति महोदय, उसी प्रकार जो गरीबों के लिए जो 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, और अब तो सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल तक 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक, दिसंबर 2028 तक और अनाज मिलेगा। अंत में आप घंटी न बजा दें, मैं एक बात और कह दूं, इस बीच के अंदर हमारे मित्र कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर सभा में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं चुनौती देता हूं, कभी भी किसी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कभी ऐलान नहीं किया था, नंबर 1। नंबर 2, कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसी समय रघुराम राजन कमेटी का गठन करवाया था नीतीश कुमार जी ने चिदम्बरम साहब से मिलकर, और रघुराम राजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि अब देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं तो 14th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि 5th फाइनेंस कमीशन ने 69 के अंदर पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट दिया था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने 2015 में विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। इसलिए 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी शब्द आया ही नहीं है। तो महोदय, जब 14th फाइनेंस कमीशन ने, रघुराम राजन कमेटी ने, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने खत्म कर दिया, और जब लालू जी देश में रेल मंत्री थे, बड़े ताकतवर मंत्री थे, रात को 12 बजे राष्ट्रपति को उठाकर बिहार की विधानसभा को भंग करवा दिया। उस समय उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? और नरेंद्र मोदी ने तो विशेष राज्य के दर्जे से बिहार को जितना मिलता उससे ज़्यादा दे दिया। जो पैकेज दिया, पीएम पैकेज, 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया बिहार को, पीएम पैकेज। केवल भारत में अकेला राज्य बिहार है जिसको केंद्र की सरकार के द्वारा पैकेज दिया गया। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। आंध्र का तो घोषणा थी सोनिया जी का, कि घोषणा थी सदन के अंदर कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहाँ मिला? अब देश के किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिल सकता है। हाँ, राज्य को मदद मिलेगी, केंद्र मदद करेगा, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा न बनाए तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को भरोसा है कि यही व्यक्ति जो महंगाई नियंत्रित कर सकता है, यही व्यक्ति है जो देश का विकास कर सकता है। और इसीलिए आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और 4 राज्यों के अंदर सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार चल रही है। देश के 51% क्षेत्रफल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। और इसलिए सती महोदय,
अर्थव्यवस्था को हमने बेहतर बनाकर दिखलाया है। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी पर कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारत को जिस संकट से उबार कर और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे, ये ग्रोथ ये सड़क पर, ये नीचे दिखाई, जमीन पर दिखाई पड़ेगा और लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, सांप्रदायिक और जातीय गणना के नाम पर वोट नहीं देंगे। जातीय गणना का मुद्दा तो बहुत उछला था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कहाँ लोगों ने वोट दिया, कहाँ वो मुद्दा बना। तीन ही शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ला, 8 मिनट्स। धन्यवाद सभापति जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस आर्थिक मुद्दे पर इस सदन में बहस की अनुमति दी, जो कि एक बहुत ज़रूरी आज के वक्त में है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और ना अर्थशास्त्री की तरह बोलूँगा। मैं एक सामान्य व्यक्ति के जो समझ में आता है उसी आधार पर अपनी बात रखूँगा। मेरा अपना मानना है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति, इन दोनों पर कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी को समानता रहती है और रहनी चाहिए। यही अभी तक की परंपरा रही है। अगर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए थे, तो उसके बाद चाहे देवगौड़ा जी की सरकार हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, अटल जी की, उन्होंने उसको पालन किया था। एक बार मैं पत्रकार के रूप में नरसिम्हा राव जी के साथ जो है स्पेन गया था और वो प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पत्रकारों ने ये प्रश्न उठाया कि आप तो आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि आप इंडिया में ये चेंजेस कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन कल आपकी सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा फेमस सेंटेंस वहाँ बोला था, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल। कोई भी सरकार आए इसको बदल सकती नहीं है। तो ये चीज़ जो है लगातार चलती रहनी चाहिए, ये नीतियाँ लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन कुछ प्रयोग पिछले 10 साल से हो रहे हैं जिसमें पिछली सरकारों की चीज़ों को अंडू करने की कोशिश हो रही है, उनको बदलने की कोशिश हो रही है। हमारे मित्र सुशील मोदी जी सम्मानित अभी बात कर रहे थे कि चुनाव के नतीजों से, जो चिदम्बरम साहब की बात का जवाब दे रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, तो उन्होंने चुनाव के नतीजों का हवाला दिया। सुशील जी, चुनाव के नतीजे 5 साल पहले क्या थे? तीनों राज्य हम जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद लोकसभा हार गए थे 5 महीने बाद। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये तर्क कहीं बैठता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस जो बहस को हम उसी गंभीरता से रखें जिस मुद्दे पर आर्थिक स्थिति की वो है, और उसकी हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं। और अगर इसके आंकड़ों का, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, पूरे उसमें 4,81,00,000 वोट जो है भाजपा को मिला है और 4,91,00,000 कांग्रेस को मिला है, 10 लाख ज़्यादा। तो हम इसको अगर उस तरह से गणना करके देखेंगे तो फिर ये बात कहीं रही नहीं जाएगी कि, तो इसलिए जो है हम समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने बहुत मतलब गंभीरता से इस विषय पे डिस्कशन के लिए रखा है, तो हम उसी पे जाते हैं। सबसे पहले पुराना गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो वादों पे जाते हैं। तो वादा नंबर 1 क्या था कि हम काला धन वापस लाएंगे। वापस तो आया नहीं, उल्टे जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जिसको कोट किया था सुधांशु जी ने, 6 लाख उद्यमी जिनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं विदेश चले गए। यहाँ की 2 लाख ने तो नागरिकता सरेंडर कर दी भारत की। और उद्यमी जब जाता है तो सोचो कि वो लाखों लोगों का जो है, वो लाखों लोगों का के रोजगार को जो है छोड़ के जाता जो भारत में मिलना था। वहाँ जाके उद्योग जब जाता है तो सोचो कि वो लाखों लोगों का जो है, वो लाखों लोगों का के रोजगार को जो है छोड़ के जाता जो भारत में मिलना था। वहाँ जाके उद्योग लगा रहे हैं, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और उसके अलावा जो है यहीं से पैसा जा रहा है। तो उल्टे जो पैसा 4 लाख करोड़ आना था, 10 से 15 लाख करोड़ के करीब पैसा बाहर जा चुका है देश का। ये गंभीर विषय है, इस पे मुझे लगता है वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए कितनी भारी संख्या में उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं और बाहर क्यों बस रहे हैं।
तो ये उनको सोचने की बात है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि देशभक्त नहीं थे, देशभक्त थे। मॉर्गन स्टैनली के रुचि शर्मा ने 2016 में फिक्की की स्पीच में कहा था, 2016 में वार्निंग दी थी, तब मुश्किल से जो है 50,000 लोग गए थे कि क्यों भारतीय जो है भारतीय बिजनेसमैन, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उनको रोको। तो ये चीज़ देखने की है कि क्या ये सरकारी एजेंसियों के ज़रूरत से ज़्यादा दबाव की वजह से जा रहे हैं या क्या वजह है, उनके साथ अन्याय हो रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा वादा था 50 रुपये लीटर पेट्रोल, 40 रुपये डीजल, हमारी सरकार आएगी। आप कह रहे हो कम हो गया, मुझे तो कहीं कम नहीं दिखाई दे रहा। अब आप गणना बता रहे हो कि इस राज्य में 96 का, वहाँ 106 का, 50 और 40 रुपये का तो नहीं है जो पहले था कि 50 और 40 रुपये में बिकेगा डीजल पेट्रोल। वो वादा तो पूरी तरह गलत साबित हुआ। और ये तब मैं तो योजना मंत्री था, जो है ब्रेंट क्रूड की रिपोर्ट रोज आती थी। हमारे ज़माने में $115, $120 का जो है तेल मिलता था, क्रूड ऑयल, और उसके बाद जो है हाँ हम 60 रुपये पे देते थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सस्ता, यहाँ तक कि एक वक्त $22 पे पहुँच गया था इस सरकार में, और अभी भी 40, 50, 60 के अल्ले पल्ले रहता है, 80 के अल्ले पल्ले रहता है, पहले से बहुत कम है। फिर भी ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसको जो है हमें देखना चाहिए कि हम क्यों 100 के पार चला गया पेट्रोल, और डीजल भी उसी के करीब करीब पहुंचा। इसका आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, माने कि माल ढुलाई, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, और ये जनरल महंगाई को बढ़ाने में सबसे गजब इसका मतलब प्रभाव पड़ता है। और ये आप कहें कि चुनाव के पहले कम कर दो, चुनाव खत्म होते फिर बढ़ जाता, तो ये चुनाव से लिंक नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं या क्रूड ऑयल के दाम के हिसाब से उसका फ़ायदा जनता को देना चाहिए। तीसरा वादा था कि 2022 तक हर किसी को पक्का मकान। क्या हुआ पक्का मकान हर किसी का? तीसरा वादा पूरा हुआ, और ये वादा तो लाल किले से दिया गया था, आज तक कोई पक्का मकान नहीं बना। चौथा वादा था डॉलर के मुकाबले रुपया। जब 50 हो गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इतना हंगामा हुआ था कि ये देश की इज्जत गिर गई, देश का अपमान हुआ है। रुपया कमज़ोर हो गया, मतलब देश, भारत देश का विश्व में अपमान हो गया। इतना हंगामा, वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, क्या क्या नहीं कहा गया था। आज 80 से लेके 85 के बीच में डॉलर है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला जाता, कहीं किसी किस्म का देश का अपमान नहीं हो रहा। तो ये पांचवा वादा भी उसी तरह से, चौथा वादा भी उसी तरह से विफल हुआ। और पांचवा वादा 2 करोड़ रोजगार, जिसको अन्य लोगों ने भी बोला है, तो अब तक जो है मेरे हिसाब से 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखें जो आंकड़े हमारे पास हैं, बेरोजगारी की दर जो 5% होती थी 2014 से पहले, वो 10.09, 10 मतलब 11% के करीब हो गई। ब्लूमबर्ग ने सेंट्रल फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं, बिना नौकरी के 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, और क्वालिटी ऑफ जॉब तो बहुत ही कम है इसके हिसाब से। पिछले साल 1,70,00,000 लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 38,850 को सिर्फ नौकरी मिली। इंजीनियर, जो पढ़ाई लिखाई में जो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े उसमें किए हैं, वो सब जो है अप्लाई कर रहे हैं चपरासी की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी। वही अगर अच्छी अर्थव्यवस्था होती तो पढ़े लिखे लोग ऑफिस में, फैक्ट्री में काम कर रहे होते और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस तरह की कोई चीज़ करते। आप देखो ना, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज देना पड़ रहा, अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये योजना, खाद्य सुरक्षा बिल, जयराम जी यहाँ बैठे हैं, मनमोहन सिंह सरकार लाए थे और उस समय ये लागू हुआ, तो उसी प्रावधान की अच्छी बात है, हम इसमें कोई नई सरकारें आती हैं देती, लेकिन जो है इसको चालू रखना चाहिए, देना चाहिए, गरीब को भोजन मिलना चाहिए। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये कभी सोचा? आज हालत ये है कि अगर वो बेचारा परेशान है, वो नौकरी करना चाहता है लेकिन नौकरी नहीं है, वो नहीं मुफ्त अनाज लेना चाहता, वो अपमान के साथ नहीं जीना चाहता, लेकिन हम नौकरी नहीं दे पा रहे, हम रोजगार नहीं दे पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो घर में बैठा मजबूरी में। आपने देखा कोरोना के वक्त लाखों लोग पैदल 800-800 किलोमीटर चल के गए, क्योंकि 4 घंटे का नोटिस दिया गया। अगर 2, 4, 5, 10 दिन का नोटिस होता, लोग ट्रेन से पहुंच जाते कैसे, और वो लौट के आए नहीं, कभी कोशिश नहीं कि उनको वापस ले आ जाए, वो गांव में बैठे। तो ये जो है हम देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम उनको काम देना चाहिए।
अगर 10,000 सरकारी नौकरी का अगर वो निकलता है वैकेंसी, तो 4-4 लाख लोग हो जाते हैं। लाठी चार्ज करनी पड़ती है। पुलिस में भर्ती का देख लीजिए, टीचर्स की भर्ती का देख लीजिए, कैसे लोग जो है लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इस तरह के हमें रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए कि नौबत ना आए। छठा, महंगाई का सबने बोला, डायरेक्ट ने भी बोला, सारे लोगों ने यहाँ पे बोला। कौन चीज़ सस्ती है बता दीजिए? न गेहूँ सस्ता, न चावल सस्ता, न तेल सस्ता, न नमक सस्ता, न चीनी सब्जी, न सब्जी दाल सस्ती, न सीमेंट सरिया, ईंट मकान, दही जलेबी तक सस्ती नहीं। तो क्या स्थिति है? जब कुछ सस्ता नहीं है, रेल का किराया तक बढ़ रहा, तो जो महंगाई दर है इसको काबू करने की आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई जो है बहुत ज़बरदस्त बढ़ती चली जा रही। जो वादा था उसके मुकाबले महंगाई दर नहीं है। 7वां वादा स्वच्छ भारत था, बहुत अच्छी बात, हम सब लोग खुश रहे। 1-2 साल तो अच्छा चला, कई मंत्रियों ने झाड़ू लगाई, सड़कें साफ की, इधर किया उधर किया, खूब फोटो छपे, गांधी जी का चश्मा लगा के जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगे। आज कोई सफाई पे बात ही नहीं होती, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह पिए। और टॉयलेट एक प्रेम कथा, इस तरह से फिल्म, जब भी कोई काम शुरू होता है सरकार में, पहले बॉलीवुड से फिल्म बनवा देते हैं, फिर वो फिल्म के जरिए जो है पूरा ही चलता है। और आज टॉयलेट्स की हालत देखो गांव-गांव में, भाजपा के हमारे सांसद बताते हैं कि किस इस तरह की स्थिति है। सर, टॉयलेट्स की स्थिति जो है वो स्टोर बन गए हैं, गोदाम से बन गए, लोग उनमें कपड़ा सामान दूसरी चीज़ें रख रहे हैं, क्योंकि उनमें पानी का समुचित इंतजाम नहीं, उनको सफाई का इंतजाम नहीं, तो वो टॉयलेट से बने बनाए पैसा बर्बाद, उनका कुछ हुआ नहीं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि टॉयलेट्स की जो बुरी हालत है उसको भी देख के काम करें, है ना। 8वां, सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 5 मिनट। 8वां, अभी तो ये तो सर सिर्फ ये, अब तो मैं सुझाव दूंगा, अब कुछ सुझाव भी है ना सरकार में, तो पॉजिटिव डिस्कशन पे हूँ। 8वां वादा सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास 8वां वादा सर 10 वादे, फिर उसके बाद सुझाव 10 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 8वां वादा सबका साथ सबका विकास। जब मैं योजना मंत्री था तो मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे और वहाँ पे आते तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया था योजना में, जिसमें कैसे राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्र सरकार को मदद देनी चाहिए। किसी भी विपक्षी दल नहीं सकते सर प्लीज, किसी सरकार को जो है विपक्षी दलों के साथ भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसी के बाद फ्लैगशिप स्कीम में सर 20% का, मतलब जो 20% का फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी राज्य सरकारों, उन्हीं के सुझाव के आधार पर। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो विपक्ष की सरकार है उनको न जीएसटी का पूरा एलोकेशन मिलता है, न अन्य सहायता नहीं मिलती, और उनके साथ तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? अगर जो इस तरह से भेदभाव होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। और यही नहीं, आपको अगर पता हो कि नवा वादा जीडीपी ग्रोथ हमारे ज़माने में 7.03 रही और 9 तक टच की थी, अब 5.25 है। हालांकि 6 का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 5.25 का आंकड़ा हमारे पास है। 10वां वादा है जीएसटी, सरल टैक्स के लिए पूरा, जैसे भारत आजाद हुआ, बस यही आखिरी वादा है। इसका तो और लिस्ट लंबी है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जीएसटी सर, जीएसटी आपको पता है कि जैसे भारत आजाद हुआ तो उसी तरह आधी रात में कर प्रणाली, कैसी सरल कर प्रणाली है कि पूछो मत। आप व्यापारी से जाके पूछ लिए, दुकानदार से पूछ लिए, परेशान है जिस तरह का जीएसटी है, जिस तरह से तंग हो रहे हैं इस जीएसटी से। और भाजपा के हमारे लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, व्यापारी वर्ग काफ़ी इनके साथ रहा, उस सब इनसे रोते हैं आके कि क्या हमारी गति है। ये जीएसटी का सरलीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि सर बड़ा जरूरी है। इन्होंने रामायण की चौपाई पढ़ी सुधांशु जी ने, तो उसी सुंदरकांड की हम चौपाई पढ़ते हैं सर। सचु वैद्य गुर 3 जब, और प्रिय बोले भयास। आपका सेक्रेटरी, आपका डॉक्टर और आपका गुरु अगर डर के मारे आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा, तो राज धर्म और देह, तो राज धर्म और देह 3 का होत बेगही नाश। इनकी चौपाई के जवाब में तुलसीदास जी की चौपाई है। अब सर सुझाव राजीव जी, ये बात लागू कहाँ कर रहे हो? ये बात किसके बारे में कह रहे हो? समझने की है, ये बात समझने की है। और श्री कार्तिकेय शर्मा सर, मेरा रह गया सुझाव तो रह गए, एक मिनट सर। श्री कार्तिकेय शर्मा सुनिए सर, मेरा सुझाव सर, आई लोग द चेयर लिख कर दे देना, ठीक। राजीव जी, you have taken 50% more time than time allocated.
Thank you, Chairman, sir. And every time you cross the time limit, I looked at wish to express my gratitude to you, allowing me to speak on this very important discussion. 1 second. Last 30 seconds. 30 seconds. एक तो शेयर मार्केट से सब सारी खुशी नहीं होती है। शेयर मार्केट में जो भी हो, लेकिन पैसे का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कुछ लोगों के पास सिमट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है, वो नहीं होना चाहिए। पहला सुझाव। दूसरा, निर्यात और आयात के मुकाबले निर्यात ज़्यादा, आयात कम है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, इस पे सब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो सरकार से, वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसका ख्याल रखें कि किसी तरह से हमें निर्यात बढ़ाया जाए और आयात हमारा कम किया जाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गडकरी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी $1.5 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना है। तो मेरा सरकार से सुझाव की कोशिश करनी चाहिए। श्री कार्तिकेय शर्मा, लास्ट कम ऑन। एक तो रही गया सर, नहीं, ईज ऑफ बिजनेस रखिए, कुछ रिजर्व में रखिए। ईज ऑफ बिजनेस में क्या है कि परेशान है लोग ईडी और जीएसटी वालों से, और इसके अलावा आप इधर से बोल रहे हो, कुछ रिजर्व में रखिए, से रेड टेपिज्म से। तो इस पर सर हमें कोशिश करनी चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाना चाहिए। और कार्तिकेय जी 3 minutes. Sir. Go ahead. Sir, from inheriting an Indian economy which was slipping southwards to being painted as the global bright spot, with the Indian economy registering the fastest growth rate among large economies for 2 successful fiscals, and in the course for the 3rd time in financial year 24, is a stellar achievement of the Modi government that invites deep analysis. The journey of Indian economy was steered clear through the phases of global slowdown in 2019, COVID lockdowns, commodity price steep escalation due to the war in Ukraine and global tensions, and tightening of global financial conditions. India's economy has been the fastest growing among the world's 20 largest economies for the 7 of the past 9 years. And those were only the 7 years in the past 76 years that India has achieved this distinction. India's USD 3.3 trillion GDP overtook that of the UK in the fiscal year ending March 31, 2022, making it the 5th largest economy in the world. The Indian economy, according to the IMF estimates, will emerge as the world's 3rd largest economy by 2027, hopping over Japan and Germany as its GDP crosses US $5 trillion. By 2047, India aspires to be a developed economy. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Modi. Sir, I would like to quote a couplet from the famous poet Wasim Barelvi. दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो डुबाते रहे मुझे और मैं उभरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। Sir, we have achieved success in improving our GDP from 2.3 trillion in 2014 to 3.75 trillion now. On the ground, in 13-14, our per capita income was 68,000 rupees, which has now increased to 1,80,000 rupees in 22-23. In 2014, the capital expenditure was 3.9 lakh crores, and the union government under the leadership of Prime Minister has increased it to rupees 10 lakh crores by 2023. A senior member of parliament before me spoke about the issue of states. The union government has increased the allocation to the states under the various schemes from rupees 30 lakh crores during 2004 to 14 to about 100 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. Between 2004 and 14, tax collections was 19 lakh crores, which has now increased to 70 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. GST collection has reached rupees 1.87 lakh crores in April 2023, and monthly average GST collection is 1.69 lakh crores. Our foreign exchange reserves were 309 billion. Today they stand at 593 billion. So, sectors like hydrogen, semiconductor, electric vehicles, solar, energy, defense, Sharma ji, drone space, mining. Please conclude, Sharma ji, please. Thank you, sir. Next speaker is GVL Narasimha Rao garu. GVL Narasimha Rao garu. Speak loudly. Thank you, Chairman, sir.
when we speak about the resurgence of Indian economy, it is important for us to reflect on India's historical economic stature and see in that trend, in that over centuries, how India has become, how over decades India has become stronger. Today, we are certainly celebrating as the 5th largest economy. This is a great achievement for the country. We have been able to, from the 10th position in 2014, in a matter of few years, we have reached the 5th largest economy position today. And a report yesterday by the S&P, it states how India is going to be the 3rd largest economy by 2030. So by the time Honorable Prime Minister completes his term in 2029 and gets ready for his 4th term, India would have become the 3rd largest economy in the world. And if you go back a few centuries ago, in ancient India, we were the largest economy of the world. We were known as the golden bird, Sone ki chidiya, until 5th century AD. This remained India's position in the global, in the global scenario. But 1,000 years of rule by invaders, by foreign rulers, has robbed India not only of its rich wealth, it also robbed India of its confidence. So when Honorable Prime Minister took over as the Prime Minister of the country, he has given a complete new direction to India's economy. He has instilled confidence in India's growth story, and Amrit Kal has truly begun. We are certainly passing through this Amrit Kal. And Atmanirbhar Bharat is the strategy for achieving India's preeminent position in the global economy. And I would like to tell our friends from across the Treasury benches, the opposition benches, I'd like them to know. In 2004, when UPA came to power, India was the 12th largest economy. They were in power for 5 years until 2009. India moved from the 12th to the 11th rank. And they remained in power for another 5 years. In those 5 years, they could take India from the 11th to only 10th rank. But look at the geometric growth experience during the rule of the Honorable Prime Minister. India, I think you have blamed it as Hindu rate of growth. You have used governments of the Congress denomination in the early years of independence have used this term Hindu rate of growth to deride Hindu religion. But during 10 years of your rule, what have you done to Indian economy? You have not been able to, you claim to have given great growth during the years of Manmohan Singh regime, but all that India could move was from the 12th rank to the 11th rank, going on to 10th rank. But Prime Minister Modi ji, in a manner of 9 years, he has taken India to the 5th rank, and in a manner of years, by the completion of his next term, we are going to be the 3rd largest economy in the world. This is certainly a huge achievement for the country, and that is what is giving the BJP and Honorable Prime Minister and his leadership a huge fillip in India's elections. So, inflation. Our friends, I have busted their theory of growth. We gave growth. We gave a high growth economy. And I told them how India's position remained globally almost at the same level through 10 years of UPA. And let me now bust their inflation claims. During the first 5 years of Prime Minister Narendra Modi ji, the average inflation rate in India was only 4.4%, well below the RBI ordained level
which is range between 4 to 6%. Look at the Congress party's performance. Look at the UPA performance. What was the inflation levels in the UPA rule? In 4 years, between 2004 and 2014, inflation levels were well below 10%. Double-digit inflation, what UPA has given this country. It was 13.9% in 2009 and 10. And under Prime Minister Modi ji, at a time when the world is experiencing one of the highest levels of inflation, India has been able to contain inflation well below even the RBI levels. Let me give you some numbers. The US inflation level is above 7%. Let me give you the exact number. UK, US experienced over 7%, highest inflation in 40 years. UK is experiencing one of the highest inflations in the last 30 years. It is currently 7.9%. It was in June 2023, which is a high after 41 years. Europe is also struggling with inflation. Germany, which is Europe's largest economy, also has one of the highest inflation levels. It is only India. It is only India which has not only maintained high growth during the post-COVID period, it has also maintained very, very low to moderate levels of inflation. So the friends from the Congress who claim there is high inflation must look back, because any comparisons that you do, any comparison of any performance, you have to do over time. You have to do spatially, and you have to do cross-sectionally. And time series performance clearly tells us how Congress governments have given only inflation and not a real growth. Let me give some more numbers. One of the highest levels of inflation in India's post-independent India were 19.3% in 91-92 under a Congress leadership, 95-96, 12.8%, and under Srimati Indira Gandhi, it even touched double-digit. It crossed even 30% for 2 years. So this is the Congress story. So every time Congress comes to power, they bring inflation along, and it is only the BJP-led governments, the NDA governments under Prime Minister Narendra Modi ji, which have given relief to the common man. Jab Congress aati hai, tab mehengai lati hai. I think this would be a nice slogan that would go along with them, because in Karnataka, where they came to power only in early this year, in May this year, soon after they came to power, they hiked milk prices by 3 rupees per litre. They hiked electricity charges, though through a very indirect mechanism, by increasing fuel and power purchase cost elements in this. They have increased every commodity that a common man needs for his survival. So the Congress party's only guarantee is mehengai guarantee, is inflation guarantee, and nothing else. So if you look at our performance, India's GDP growth for the last year was 7.2%, the fastest growing economy of all the major economies in the world. And this has been possible. This high growth trajectory has become possible because of a measured response, because of a judicious economic policies that the government pursued, mainly during the COVID and post-COVID era. And friends from the opposition, all of them claim that India's economy can only be revived by putting money directly into the hands of the people, by giving helicopter money. But that kind of any country, all countries that have followed that prescription have actually failed. And these are the countries which are experiencing
one of the highest inflation levels in half a century. Prime Minister Narendra Modi's economic vision and economic policy is today being hailed as the best in the entire world. What has made this kind of an economic transformation, this kind of a turnaround possible? Let me give a few illustrations. Let me cite a few cases. One, the Atmanirbhar vision. I think COVID, which is a challenging period for the entire globe, was used to unveil a new economic vision that was Atmanirbhar Bharat vision that has actually helped India transform its economy. Also, our governance principle, Prime Minister's governance principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, actually translated into money reaching to the most needy people and ensuring that they do not suffer the hardships of the COVID period, and they are able to lead a very happy and a healthy life. Second, a digital revolution. I think the whole world is overawed by the success of Indian economic digital revolution. Today, in October 2023, we have touched an all-time high of 11.4 billion UPI transactions, crossing even 10 billion transactions that we got successively for the 3 months. And this resulted in a digital transaction of over 17.16 lakh crore. So this certainly was a contributor. It transformed Indian economy into a cash-based economy, into a digital economy. Clearing the banking mess, because what the UPA left for Narendra Modi ji was a banking sector in complete mess. This government has not only cleaned up the banking sector, it has actually infused dynamism into the sector. Today, the Indian banking sector is one of the best performing banking sectors anywhere in the world. While many banks, even central banks, have experienced difficulties abroad, Indian economy, Indian banking sector is going through its best periods. Gross NPAs and net NPAs are at their decadal lows. And public sector banks have their resources have now been used for acting as pillars of Jan Kalyan. In fact, public sector banks have recorded profits of over 1 lakh crore in the last financial year, and that money has been plowed into financing the welfare of the poor. Also, we have seen how a transparent regime like the GST, which is a huge contribution of Honorable Prime Minister. GST collections are at their highest levels. 1.72 lakh crore was the GST collection in October 2023. This is the second highest ever. A few months ago, a year ago, 1 lakh crore also was considered to be a very important milestone to be achieved. And today, we have crossed 1.73 lakh crore. This clearly shows the buoyancy in the Indian economy. It shows the resurgence in the Indian economy. And anyone who disputes it can only get their validation in these numbers. There is also a surge in direct tax income, direct tax revenues. The direct tax revenues are 10.6 lakh crore till 9th November, as against 10.6 lakh crore previous year during the same period, which has registered a near 22% healthy growth. This clearly shows even the net growth in corporate income tax collections shows a 12.5% rise. So there is a resurgence in the Indian economy across all the sectors. The investments, both the private investment and the foreign direct investment, have shown a big improvement. The foreign direct investment during the UPA 10 years, during the UPA 10 years was $304 billion, which has more than doubled to $628 billion so far. This is an increase of more than 100%. So with this kind of a performance, the country is poised
to achieve its economic goals. Please and conclude. Very soon to become third largest economy in the world and going back to achieving India's ancient glory under Prime Minister Narendra Modi ji. Yehi Modi ji ki guarantee hai. Thank you. Thank you very much. Thank you. Next speaker is Dr. Ami Yazni. Ji, Madam. Hearing the Treasury benches speak about the state of the economy, and they speak only from 2014 onwards, I would like to remind them that we have to go back to 1991 when we had the new economic policy. That is the point when the borders for economy were opened for foreign investment to come in the country. When foreign investment policy was taken, at that time, Dr. Manmohan Singh ji was the finance minister. I would just like to point out a few things before I just come to the main 2 points. Structural reforms were ushered in, and the structural reforms take a long time to result, and it took a long time. It takes always, you look at the world economy in any way. So this 1991 was the starting point. So we may have to refer to these points and not just jump to that we have become independent only in 2014. Now, coming to the state of economy today, 3 main factors, 3 main areas which I would like to say in a short time. First is the farmer section, the agriculture sector. Some of the data is not even in the formal economy because they are landless farmers who are working on farms. That productivity is not reflecting in the formal economy. That farmer section or that particular sector is devoid of any reforms today. They are wanting some kind of reforms which is not reflecting in the economy, and we are seeing landless farmers. We are seeing farmers who are wanting some kind of reforms, and they want credit, they want equipments and several other things. The second sector which is very important and which nobody is talking about is the MSME sector. The MSME sector has got 630 lakh units which are micro units. Post-COVID, quite a few high number, I do not want to go into the data of 15,000 or 20,000 have closed down. Where is the credit facility? You talk about schemes, but have these schemes percolated to those units? Have those units revived? Have the labor force been able to re-enter these particular units? Whether the technology transfer, and you are continuously talking about comparing with Germany, Europe, UK, US, and you want to take only talk about foreign. Have you tried to look internally, locally? You are giving food, ration, to more than 50% of the population. 80 crores people are getting free ration. What about employment? Coming to employment later on, back to MSME sector. Where are the credit facilities? Where is the credit which is required to revive a unit and give them life? And this MSME sector is the backbone of the economy. And you are not speaking about this backbone of the economy. You are not speaking of the MSME sector. You are not talking about technology transfer to this particular section. And you are not even having the right data on the MSME, that whether they are surviving, they are going to revive, or they are going to see that the economy gets strengthened. Sir, the third is the gig workers. We have not got a workforce which is regular. They don't even get retirement perks. They don't get any health care because they are gig workers. You talk about these gig workers, they are not regular workers because industry does not employ them. You have graduates who come out of universities because you have got tremendous universities flourishing, private universities. And you have got different economic education policies for these universities. The graduates who come out are unemployed youth. Why are the youngsters of our country going abroad? I do not want to give the numbers that form the diaspora outside, but what about looking internally at our economy? All the data which is coming is foreign direct investment, export, but then you have to look at what has happened to export and import. The export has gone down, you are importing. So where is Make in India? Where is Make in India? And let me tell you, sir, all these schemes which they are naming, they were started by UPA. This National Manufacturing Policy 2011 became Make in India.
Now, if you're making in India, where are the products? What are you doing? Why is there so much import of these components? Why are you not manufacturing? Why are you not employing your youth? Why are you not equipping them so that the economy becomes sound? And you go on talking about third largest economy. So let me tell you, sir, that our country became the third largest economy in purchasing power parity in 2011. This indicates that India's overall economic output, adjusted for the relative cost of living, was the third highest in the world. This shows that it implies that a higher standard of living for Indian citizens. Today, we talk about poverty, but we do not have poverty alleviating programs. On the contrary, we are making them handicapped by giving rations. We are not equipping them, we are not empowering them to become able-bodied people who can be employed. You are not creating employment opportunities, but you want to talk about schemes that you have renamed. So in the end, I would like to say that you have to look at the global hunger index. Where do we stand? We have to look at malnutrition for children. Our children are being wasted, stunted growth. You have to look at female infanticide. You have to look at mortality for children. What are we doing in the healthcare system? So when you talk about the state of the economy, you don't only have to talk about comparing with other countries, you have to look inward. When you make your economy strong, then you can speak about the state of the economy and not the ruling dispensation's head or people who are manning certain ministries. It's not their work, it's the work of the scheme, and it was from 1991 onwards that the institutions were put in place. These institutions acted as regulatory mechanisms. Where are those institutions? Why are these institutions not getting accountable for not performing? These are these non-performing assets, apart from the non-performing assets of the bank. We have not been able to bring that money back. Forget about the black money you talked about. Forget about 15 lakhs going to each one's account. We have not been able to say anything about that. The ruling dispensation has got some kind of a fixation. They are living post-2014. They forget their own childhood that they studied in good educational institutions. They don't give credit to their own parents, their own grandparents who got freedom to this country and are only having a straight-jacketed formula post-2014. But what have you done after 2014? Where is that education required? Where is the skill which is required to equip our youngsters to see that they become good employers, they can also create employment for other people? Where is that economy's backbone? MSME, where have you done that revival? You talk about portals, Digital India, where is that computer education? And what are these portals doing? The data on Udyam portal shows that the industries that closed down, the MSME, there is no detail. The licenses got cancelled. They couldn't revive. And they're all sitting. What about the cooperatives you want to start at the local level, at the village level? They don't get revived. You want to give employment to women. Where are the women getting employment? They have not got a re-entry in the workforce. They cannot get back in the workforce post-COVID. They're sitting at home. So what are you doing for empowerment of women? You may bring the reservation bill with a caveat. But where is the empowerment for women? How will she become economically empowered? You are not giving her health care. You are not giving her meals which are nutritious. So, sir, these are the factors which need a proper data. Where is the data, sir? There is no data. Where are those institutions providing data on all these indicators? These indicators will tell the state of the economy of this country, not who is manning the country or who are manning the institutions. And so one last point, sir. Please that conclude. Unless and until we change the game, we cannot succeed by changing the names. You may change the name of all the policies, of all the schemes, but if you cannot perform, you become a non-performing asset. The state of the economy, the students, the youngsters of this country are reading, they're watching, they're looking at all the Nehruvian era and the Rajiv Gandhi era for computerization, for all kinds of digital work which is now happening on that day. Please conclude, Dr. Yamni. And that is why the state of the economy is not as the way it is projected by the ruling dispensation. Please. Thank you very much, sir. Thank you. Next speaker is Shri Jose K. Mani ji. 3 minutes. So the economic
well-being of our citizens transcends political affiliations. It is a matter of national urgency. The economic indicator unfortunately paint a concerning picture. While the government claims economic growth, the rising unemployment rate tell a different story, impacting the lives of millions. So, to assess whether an economy is growing, to assess economic activity, to find out whether the economy is robust, we need to assess the lower strata of people, which consist of the farmers, laborers, and workers, whether the standard of living has improved. And if you go in the plight of these strata of people, we find that they are struggling for existence, they are struggling for survival, they are struggling to make the ends meet. And not only that, we find that from the data all here, we find that the gap between the haves and have-nots have increased. And about the 40% of the national wealth consists of even 1% of the population. That shows that the wealth is being amassed by a smaller portion of the population. So this really shows that the government is pro-corporate, pro-industry. There is nothing wrong in pro-industry, but it should not be at the expense of the farmers, the lower strata of the people. So when you take the agrarian crisis continues to hunt our farmers, suicide and distress in the rural sector persist. According to the National Crime Records Bureau, it states that the report states that 154 people, that is the farmers and daily wage laborers in India, commit suicide. It's a huge number. I think it is the largest in the world. So definitely there's something wrong with the system. We need to find, and really when you go into in deep, we can find that the economy, when the activities are there, it is not translated into the farmers. Please conclude, Jose. Yeah. Please conclude, Jose K. Mani, please. Sir, please. When the live example, I can tell you that the rubber farmers of Kerala, sir, you know the rubber farmers. Please, sir, 1 minute, sir, 1 minute, sir. Sir, sir, it is a strategic product. That's why in 1947 the Rubber Act was enacted and the rubber board, electron rubber board was introduced. But we know that the price of the natural rubber can be improved only at the policy of the central government. If there is we find that any states where there is no political gain by the BJP, they will not give any development at all. Please. It is discrimination. Please, Maniji, we need please to conclude. see the nation as one. If there is no political gain, no development, in the farmers are not helped. Please. So have a heart, actually help the rubber farmers. It is for the nation's development. Thank you very much. Next speaker is Sri Mahesh Jatmalani ji, please. Not present. Not present. Next speaker is Sri Vaiko ji, MDMK. Mr. Vice Chairman, sir. 3 minutes, Vaiko ji, please. I'm so thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the economic situation in the country. India's current GDP is $3.75 trillion US, which the present BJP government claims it would go to $5 trillion in 2025. But who will be benefited by this growth? It is a jobless growth. Unemployment is increasing.
As on October 2023, it is 10.505%. The educated unemployed youth in the country are struggling to get employment opportunities. We are witnessing every year 1 crore job loss in our country, and the wages of the workers are falling drastically. We are witnessing the continuing agrarian crisis. You have promised doubling the farmers' income, but unfortunately, farmers' income did not get doubled, but at the same time, suicides of the farmers got doubled. Our banks are in deep crisis. What is the remedy that they are putting forward? The bank NPAs are rising, and the government is providing further concessions to the corporates to write off their loans, but they are not prepared to reduce or write off the loans of farmers, students, and small entrepreneurs in the MSME sector. This country has also faced inflationary pressures over the years, influencing the current unemployment rate in India. High inflation rates can erode the purchasing power of consumers, leading to reduced demand for goods and services. This can have a cascading effect on business, resulting in cost-cutting measures, including layoffs and hiring and firing jobs, leading to higher unemployment rates. Already there is a decline growth of 4.3% against 15.5% year over year in trade. Transport, hotels and communications industry. As I said, inflationary pressures lead to price rise in the essential commodities. Raw cotton prices increase in the inputs for agriculture and livestock. Higher GST rate for common items are reducing the purchasing power of the common man. The structure of public sector undertakings in your regime is crumbling. One by one, the public sector unit is sold to the corporate giants. When the crude oil is sold at a lower price in the international market, I am not able to understand why the union government is not reducing petroleum retail price to the common people. The price of LPG has been increased manifold in the last 2 years, and it is now beyond the affordability of the poor people. You have a scheme called Ujjwala, but how many people are registered in that scheme? And in that also you have restricted the number of cylinders in the year. So the government should bring down the price of petrol, diesel and LPG, keeping the interest of the common man. The spinning industry in Tamil Nadu has been facing unprecedented losses for several months. For the first time in the last 20 years, exports of yarn and textiles have declined by around 28%. A mill having about 10,000 spindles would produce 2,500 kilograms of yarn per day, which is incurring a loss of 1 lakh per day. The structure of state finance is also very much affected. After the introduction of GST, the revenue has come down. There is no proper distribution of GST collections to the states. The states which are supporting the ruling party at the center are given a favorable position as compared to the states which are ruled by the opposition parties. Our state, Tamil Nadu, is not getting its rightful due from the, from the GST collections despite demands from the state government. The recent Migdam cyclone has created havoc on the coastal districts of Tamil Nadu, apart from Andhra Pradesh. Our fishermen have lost their livelihood for the last 6 days. Their boats and nets have been washed away. The farmers have lost their standing crops due to waterlogging. In the city of Chennai, the whole city was submerged due to unprecedented heavy rains for the last 2 days. Though the state government is doing its best by providing shelter and food at the community centers for the people living in the low-lying areas, it is the due fury of mutual nature, which is a big challenge. The union government should rescue and relief materials and financial assistance to the state without delay. Very important point. धन्यवाद. माननीय श्री समीर उरांव जी. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदया. आपने आज के भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित विषय पर सदन में चर्चा करने के लिए भाग लेने का अवसर आपने दिया है. उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विभिन्न निर्णय के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे आगे बढ़ाया है और बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है. उपसभापति महोदया,
आज विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समूचे विश्व में पिछले कुछ वर्षों में रूस, यूक्रेन युद्ध, इजराइल, हमास युद्ध, कोरोना महामारी जैसे अनेकों संकट का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद इन सारे समस्याओं के कारण विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच एवं आर्थिक अनुशासन के कारण इन अनेकों संकटों का सामना करने के पश्चात भी भारत की अर्थव्यवस्थाएं स्थिरता के साथ समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। उपसभापति महोदया, आज सरकार की मजबूत आयात निर्यात नीतियों के कारण देश में विदेशी मुद्रा का भंडार अपने देश के अंदर उच्च स्तर पर हो रहा है। सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन इस देश के अंदर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सरकार द्वारा ऐसे देश के अंदर जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण करके असहाय लोगों को, विकलांग लोगों को और वृद्ध लोगों को पेंशन योजनाओं के माध्यम से ये लाभ प्रदान करने का भी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर इन सामाजिक योजनाओं पर खर्च के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था लगभग सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। उपसभापति महोदया, सरकार द्वारा एक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने के पश्चात व्यापारियों को टैक्स के नियमों में से सरलता मिली है। इसके परिणाम स्वरूप इस वित्तीय वर्ष में सरकार को ऐतिहासिक रूप से अब तक के सबसे बड़े जीएसटी संग्रह प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे संस्थाओं द्वारा आगे के वर्षों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक देखा जा रहा है। उपसभापति महोदया, इसी के कारण आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। विश्व के अनेक देशों की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक विदेशी निवेश की यदि किसी देश को प्राप्त हुआ है तो वह भारत है। उपसभापति महोदया, पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के सूत्रों के आधार पर हमारे स्थानीय उत्पादकता को किस प्रकार से यहाँ के युवकों के माध्यम से जो आगे बढ़ाया है, जैसे जो है हम जनजाति क्षेत्र से आते हैं, झारखंड से आते हैं, झारखंड में वन क्षेत्र है, वहाँ जो है वनोत्पाद है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वहाँ किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति कार्य मंत्रालय में जो है ट्राइफेड का वंधन विकास केंद्र के माध्यम से वहाँ के जनजाति क्षेत्रों में हमारे माताएं युवकों ने जिस प्रकार से ऐसे वन उपज को कलेक्शन करके उसको प्रोसेसिंग करके उसको विपणन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से यहाँ की उत्पादकता, जो पौष्टिकता और यहाँ के जो खाद्यान्न पदार्थों में जो ह्यूमिडिटी पावर था, उसको दुनिया के देशों में वो मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में पहुँचाने का काम किया और वहाँ उनकी उत्पादकता बढ़ने के साथ आमदनी बढ़ रहा है। आज हम गाँव में 10 साल पहले जाता थे तो हम उस समय कुछ नहीं देखते थे। आज जब 10 साल के बाद मैं जाता हूँ इन 9 वर्षों के अंदर में, तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, तो नहीं, हम लोग एक मिनी राइस मिल बैठा है यहाँ पे, सारे लोग हम लोग मिल करके आसपास के जो भी धान का उपज होता है उसको हम यहाँ चावल बनाते हैं, इससे हमारी आमदनी बढ़ रही है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था में एक गांव भी सहभागिता हो करके ये भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहभागी हो रहे हैं। इसलिए उपसभापति महोदया,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2014 में जब हमारे माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत की डीजीपी 112 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। 2025 तक सरकार ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की आर्थिक उपलब्धियां का लाभ देश की आम जनता को भी हुआ है। 2014 में देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 17,000 रुपये थी। पिछले 9 वर्षों में सरकार की नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके मेहनत के कारण आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,75,000 हो गई है। उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में देश के एक्सपोर्ट लगभग दुगुना हो गया है। सरकार निरंतर देश की आर्थिक उन्नति के लिए हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार की आर्थिक नियत व नीति के कारण जल्द ही भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा और निश्चित रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन दिशाओं पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की यात्रा कर रहे हैं। उसमें पूरे देश भर के लोग उनके यात्रा में सहभागी होकर के आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से विश्वास है कि हम ये आने वाले दिनों में, ये 2024 में हम निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे और उसके और आगे जाने पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो है पहले स्थान तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री जी.के. वासन जी। Thank you, Madam. The country has demonstrated resilience and adaptability in face of persistent global challenges. We all know natural disasters like COVID has cost the economy of this country. Even yesterday in Tamil Nadu, in Chennai and neighboring districts of Chennai, because of cyclone-triggered rain, water bodies have been overflowing and surplus water release has caused damage to the infrastructure of Chennai and nearby districts. Madam, the Army, NDRF and state agencies are involved in the relief and resume operations. But the damage caused for the Chennai city and the neighboring districts need more attention immediately. I request the central government to take care of the need of the Chennai people and neighboring district people at the time of this unfortunate disaster, which they are not able to bear because of the velocity of the rain. I request the state government also to work on a war footing to bring life to normalcy in the districts and city which has been fully destroyed by the continuous rain for the past 24 hours. To conclude, Madam, Delta farmers in Tamil Nadu have been severely affected due to crop loss. Their crops have been marooned because for the 10-15 days there has been a sign of cyclone and rain in Tamil Nadu, and they are not able to bear the pain of the rain. Due to this, I am sure I request both the governments to help the farmers to adequately compensate for their loss. I am sure, Madam, according to the general assessment, I would say that while the state of our Indian economy presents a picture of optimism, and at the same time, I urge the government to take steps to tackle pressing issues like unemployment, inflation, which will make a complete ease of living
for all citizens of the country, including youth, where the government will look at the farmers in a very lenient way and help their future in their economy. Thank you very much. माननीय श्री राकेश सिन्हा जी, आपके पास 15 मिनट का समय है। 15। सभापति महोदय, जब हम अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि देश कहाँ पहुँचा और किस विरासत के साथ हम चले थे। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस परिवार वहाँ बैठी हुई है। अन्य दलें भी या तो उनके साथ थे या उन्हीं के गर्भ से निकली हुई पार्टियां हैं। अभी भारत में को ऐसा सौभाग्य लेना चाहिए। देश कहां पहुंच रहा है और देश के लोग किस आत्मविश्वास के साथ विकास यात्रा में शामिल हैं, यह देख भवन गामा विकास यात्रा का रथ वहां पहुंचा था। सैकड़ों लोग आए थे, उसमें 80% महिलाएं थीं। उनके आत्मविश्वास को मैं देख सकता था। उनमें से एक शोभा कुमारी जी से मैंने प्रश्नोत्तर किया। शोभा कुमारी उस भवन गामा गांव की थी जिनकी दादी और मां चूल्हे में गोईठे के साथ अपना जीवन बिताई थी। शोभा कुमारी को उज्ज्वला योजना का जो लाभ मिला, वो जिस आत्मविश्वास के साथ बता रही थी, मुझे ऐसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कही थी, उसका साक्षात स्वरूप देखने को मिला। एक दूसरे गांव में मैं गया, वह बदौली गांव है। वहां सुनीता कुमारी जी से मैं मिला। सुनीता कुमारी की शिक्षा क्या थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जीविका योजना के कारण जो उन्होंने अपने सम्मान की बात कही, समाज में बढ़ती हुई सम्मान की बात कही और आपात स्थिति में सस्ते दर पे जो उन्हें ऋण मिला, उसकी चर्चा की। तीसरा पड़ाव मेरा एक रघुनाथपुर साहेबपुर कमाल का था। उसी जिले में साहेबपुर कमाल ब्लॉक में रघुनाथपुर करारी एक गांव है। वहां सुनीता कुमारी मिली। जब मैंने अपने भाषण में उस कहानी का जिक्र किया जिसको मैं टेलीविजन चैनल पर कई बार बोल चुका हूं, जब मैं छोटा था और मेरी मां गोईठे से चूल्हे में भोजन बना रही थी, तो एक उनकी सखी आई और बोली, किसी का नाम लिया, वह नाम मुझे याद नहीं था, लेकिन वो कहानी मेरे मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गया कि जब वह महिला शौच के लिए गई, किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर टॉर्च जलाया और वो वापस आ गई। जब मैं ये कहानी बता रहा था तो महिलाओं के मैं दृश्य को देख रहा था और सबने कहा जो आपने सुनाया वैसी ही घटनाएं एक या दूसरे रूप में घटती रही। लेकिन प्रेमलता कुमारी जी से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा शौचालय मिलना मेरे जीवन और मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान का विषय है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीबी को मापने का जो नया मापदंड बना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नीति आयोग ने यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इनिशिएटिव जो ऑक्सफोर्ड का है, इन दोनों के साथ मिलकर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। सभापति महोदय,
2014 से लेकर 2023 तक में 24% जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी था वह लगभग 14% हो गया। 9% से अधिक गरीबी कम हुई। मैं जब विरासत की बात कह रहा था, जिस प्रेमलता जी की बात मैंने की, जिस सुनीता कुमारी की बात कही, जिस शोभा देवी की बात मैंने कही, जब इनके दादाजी थे तब कांग्रेस पार्टी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दे रही थी, समाजवादी प्रकार के समाज के निर्माण का नारा दे रही थी। लेकिन न शौचालय था, न घर था, न समृद्धि थी, न सम्मान था। जब उनके पिताजी आए तब कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, लेकिन उनका परिवार उसी शौचालय के बिना, उसी घर के बिना, उसी सम्मान के बिना जी रहा था। आज परिस्थितियां बदली। इस सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी आपने 1948 में दिया। 8 साल के बाद आपने कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाएंगे। शब्दों का एर फेर करके देश की जनता को गुमराह करते रहे और 56 के बाद 1971 में आपने कहा हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन देश वहीं का वहीं खड़ा रहा। सभापति महोदय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की टिप्पणियां 1980 के दशक में क्या होती थी और नेहरू युग में जब हमारे खाद्य मंत्री विदेश जाते थे तो अमेरिका के कांग्रेस में, सीनेट में क्या बोला जाता था, उन टिप्पणियों को मैं दोहराकर भारत के अपमान को लोगों के मन में फिर से लाना नहीं चाहता हूं। किस प्रकार से हमारे खाद्य मंत्री को कहा गया कि कटोरा लेकर आप अमेरिका आए हैं। जिस प्रकार का अपमान भारत को सहना पड़ा, उसी सीनेट में भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए जो स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा था, वो भारत की समृद्धि का, भारत के सम्मान का, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व का एक परिणाम है। यह नेहरू युग और मोदी युग का एक महत्वपूर्ण अंतर रेखांकित हो रहा है। जो मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कही, दूसरा इंडिकेटर वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। 2015 में 139 देशों ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया। 1 जनवरी 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट लागू हुआ। 2015 में यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 बातों को रेखांकित किया, वह सबको गौर से सुनना चाहिए। Sustainable development of 1/6 of humanity will have a great consequence to the world and our beautiful planet. The world will be of fewer challenges and greater hopes. आज उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका 2030 हमने एक समय निर्धारित किया है, पूरी दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लाने के लिए इस देश को इस बात के लिए गर्व करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की आर्थिक कार्य संस्कृति, हमारी सरकार की उस दृष्टि के कारण आज जो गोल निर्धारित हुआ है, जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है, उस लक्ष्य से हम आगे चल रहे हैं। 1.2 हम आगे चल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे धनी देशों की तुलना में भारत 1.2 आगे है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम 2030 से आने से पहले प्राप्त कर लेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष इसमें आता है सभापति महोदय, स्थूल बातों की चर्चा हुई जिसमें पर कैपिटा इनकम जीडीपी की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश में कुछ ऐसे सूक्ष्म बातें होती हैं जो छोटे स्थान पर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो 12 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें शिक्षा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें कई बातों में मैं एक बात का जिक्र करता हूं, जन औषधि केंद्र, कैसे सामान्य व्यक्ति का जीवन इससे प्रभावित हुआ है। बड़े घरों में रहने वाले, बड़ी गाड़ियों से चलने वाले, दशकों से तक सत्ता का भोग करने वाले शायद जन औषधि केंद्र के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। 7 मार्च 2022 को
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभार्थी से बात कर रहे थे। बात करते समय जिनका नाम था एंथोनी साहब से प्रधानमंत्री ने पूछा, वे पटना के थे, कि आपको क्या लाभ हुआ? जो एंथोनी ने कहा वह आंखें खोल देने वाली है। उन्हें प्रत्येक महीने 1200 से 1500 रुपए की दवाई खरीदनी पड़ती थी, जो सिर्फ 250 रुपए में हो रहा है। आज देश में 10,010 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। उसी बातचीत के क्रम में एक दूसरे लाभार्थी से जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा, मिस्टर बेहेरा से, तो बेहेरा ने कहा कि प्रत्येक महीने उनकी बचत 2000 से 2500 रुपए तक हो रही है। जो लोग अर्थव्यवस्था के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए शायद 2000 और 2500 रुपए प्रत्येक महीने का महत्व मालूम नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने गरीबी में देखा है, गांव में रहे हैं, गरीबी से जो जूझते रहे हैं, उनके लिए 250 और 2000 2500 रुपए का महत्व है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे तमाम लोगों को जन औषधि केंद्र से लाभान्वित किया है। एक दूसरा पक्ष देखिए, कैसी सूक्ष्म बातें देश के सम्मान को बढ़ाती हैं। 2020 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक बात कही, हमारी माताएं और बहनें पीढ़ियों से स्वास्थ्य की एक ऐसी प्राकृतिक समस्या से जूझ रही थी जिनके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिटरी नैपकिन को सामान्य महिलाओं तक पहुंचाने की बात करके न सिर्फ उस टैबू को तोड़ा, आज जन औषधि केंद्र में, मैं आज से 6 महीने पहले की आंकड़ा बता रहा हूं, 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन सिर्फ जन औषधि केंद्र से बिका है। वहां जाने वाली जो महिलाएं हैं, वे अत्यंत ही सामान्य परिवार की डिप्राइव्ड महिलाएं हैं। इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो मैं जानता हूं उस वक्त हमारे विपक्ष के कई साथियों ने उसका किस प्रकार से माखौल उड़ाया था। आज देश स्वच्छता अभियान में 21% जो डिप्रीवेशन था उससे आगे बढ़ चुका है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूल डिप्रीवेशन में लगभग 14% आगे बढ़ चुका है। यह जो गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टि है, जो एक योजना है, उसका एक स्वरूप देखिए। आईएमएफ हम पर क्या टिप्पणी करता था और आईएमएफ के अधिकारी हमारे बारे में अभी क्या कहा। जब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में उन्होंने कहा, यह एक चमत्कार, एक तार्किक चमत्कार है। इट इज लॉजिस्टिकल मार्वल। ऐसा क्यों कहा? मैं 2 आंकड़े आप सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2023-24 में 3,28,000 करोड़ का डीबीटी होने का अनुमान है। उससे जो एस्टिमेटेड सेविंग है, सिर्फ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को 18,000 करोड़ की सेविंग है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 40,000 करोड़ की सेविंग है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को 72,000 करोड़ की सेविंग है, और सबसे अधिक सेविंग फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 1,35,000 करोड़ की एस्टिमेटेड सेविंग है। यह जो होल इन दी बकेट, जो बाल्टी में छेद की कहानी कांग्रेस पार्टी रचती रही, जो ट्राइबल बेल्ट में पैसा जाता था, जिसके लिए रामदयाल मुंडा जी जो ट्राइबल स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था, यू आर पाइपिंग मनी इन ए लीकेज सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सारे लीकेज सिस्टम को बंद कर दिया है। जो मैंने कहा 2,73,000 करोड़ का एस्टिमेटेड सेविंग इस देश को मिल रहा है, जो गरीबों तक पहुंचता है, पहुंचेगा। जो दूसरा पक्ष, आज मैं पश्चिम बंगाल के अपने मित्र को सुन रहा था, गरीबी और बेरोजगारी की चिंता व्यक्त कर रहे थे। मुझे दुख है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लंबे शासनकाल में पश्चिम बंगाल को की जो स्थिति कर दी,
मैं उम्मीद करता था कि दूसरी पार्टी आकर सुधारेगी। आज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम यदि किसी राज्य में है वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए आज चुनौती उन राज्यों के लिए है कि देश में विकास की जो दृष्टि है उसके साथ चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृतकाल का नारा दिया। पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। राजनेता जो राजनीतिज्ञ होता है वो सिर्फ 5 साल के दौर में से देखता है। इस देश को 1947 से 5 साल के दौर से देखा जाता रहा। इसलिए देश में नीतियों के नाम पर पॉपुलिज्म, अल्ट्रा पॉपुलिज्म की बातें होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृतकाल की बात कही, एक समय योजना आयोग पर्सपेक्टिव प्लान बनाता था 10 साल आगे का। सभापति महोदय, मैं 1 मिनट समाप्त करता हूं। अमृतकाल 25 साल के जो देश के लिए लक्ष्य रखा, वो अमृतकाल का लक्ष्य क्या है? एसबीआई ने एक स्टडी किया है। आज हम 7 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन 2047 में एसबीआई का जो स्टडी हुआ, जो वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया है, उसमें 48 करोड़ लोग टैक्स पेयर होंगे, जिसमें 83% लोग टैक्स पे करेंगे। सिर्फ फाइल ही नहीं करेंगे, टैक्स पे करेंगे। और पर कैपिटा इनकम 50 लाख रुपए का होगा। सभापति महोदय, जो मध्यम वर्ग का जो फलक बढ़ रहा है, आज 2047 तक 61% देश में मध्यम वर्ग होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति बदलती है। आप आलोचनात्मक रहें, लेकिन जब देश विकास के दौर से गुजर रहा है, जब दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं, उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो इंजीनियर, डॉक्टर 47 के बाद से हमारे आईआईटी, एनआईटी से पढ़कर, हमारे मेडिकल कॉलेज से पढ़कर अमेरिका और जापान और इंग्लैंड जाते थे, वे भारत की ओर आ रहे। पहली बार दुनिया का अखबार यह लिख रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन विल मेक इंपैक्ट ऑन सिलिकॉन वैली। ये इस स्थिति के कारण मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाकर आज वहां खड़ा किया है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, 9 speakers are already listed. The tone of the discussion was set with positivity by Derek O'Brien. I have got a request from number of members, including the main opposition party, that more members are keen to participate. I would accommodate them. We have had a very fruitful debate, and I am sure it will lead to good conclusions. I have therefore decided that the discussion will continue tomorrow as well. Now we will take a special mention. Sri Ghulam Ali, demand for establishment of Fodder Corporation of India to fight stubble burning. Thank you, Chairman, sir. Establishment of a Fodder Corporation of India, modeled after the successful Food Corporation of India. Quality of debate is very high. Is imperative to combat the escalating menace of environmental degradation. The adverse effect of stubble burning and scarcity of fodder, the agriculture and animal husbandry sectors, crucial components of India's economy, face a pressing challenge with the traditional practice of burning stubble crop residues. Scarcity of fodder, high prices, and animal dying due to hunger, contributing significantly to air pollution and animals devoid of adequate fodder. A dedicated fodder corporation would play a pivotal role in addressing this issue by promoting sustainable agriculture practices. It could
incentivize farmers to adopt alternative methods for managing crop residues, such as converting them into fodder for livestock. By establishing efficient collection center and processing units, the corporation can streamline the conversion of crop residue into nutrient-rich fodder, reducing the reliance on environmentally harmful practices like stubble burning. Chairman, sir, moreover, the fodder corporation can act as a catalyst for rural development by creating employment opportunities and promoting the use of eco-friendly technologies. By integrating modern farming techniques and providing training to farmers, the corporation can enhance agricultural productivity while mitigating the environmental impact of traditional practices. In essence, the establishment of Fodder Corporation of India is not just a necessity, but a strategic imperative for fostering sustainable agriculture, preserving the environment, and safeguarding the well-being of future generations. It represents the forward-thinking approach to balance agricultural needs with environmental conservation, ensuring a harmonious coexistence between farming practices and ecological integrity. I urge government to establish Food Corporation of India. Thank you. Shri Subhash Chandra Bose Pilli, demand for mega food storage plant. Respected Chairman, sir, thank you, sir. The world's largest grain storage plant in cooperative sector seeks to address crucial objectives of strengthening market infrastructure and ensuring better prices to farmers. However, the scheme has faced conflicts with farmer producers organizations and inefficiencies in agricultural cooperatives. India's track record in maintaining infrastructure compounds to the issue, and the storage capacity for perishable producers remains insufficient. Managing food quality has been problematic, as the PDS have been known to distribute poor quality grains due to outdated storage infrastructure. There has been a lack of proactive measures and investments in addressing post-harvest losses, causing farmers to bear the brunt of these issues. Post-harvest losses in India are due to insufficient infrastructure, including suboptimal storage capacity, inadequate handling and packaging, along with the different transportation infrastructure, lead to physical injury and contamination. Price inflations increase losses for farmers, while insufficient pest and disease management practices further spoil crops. Financial constraints coupled with limited access to credit hinder investment in improved facilities and technologies. I would request the Honorable Minister for Food and Public Distribution to modernize the existing storage, including separate capacity for horticultural crops, and introduce more schemes focusing on processing perishable items. Thank you, sir. Shri Niranjan BC, demand for a broad-based and inclusive national tourism policy. Not present. Shri Tiruchi Shiva, concern over high vacancies in central universities. Thank you very much, Chairman, sir. Sir, higher education institutions significantly contribute to shaping young talent and the future of the country. But for years, many administrative and teaching positions have remained vacant in various central universities. This causes reduced student enrollment, issues on infrastructure development, research funding, and student services, increased workload on existing faculty, and restricted research output and innovation. Over 6,500 plus faculty positions are vacant across the country. Delhi University 900, Allahabad University 622, Banaras Hindu University 532, Aligarh Muslim University 498,
and JNU 326, Jamia Milan Islamia 223, Tripura University 146, Central University of Kashmir 116, Central University of Haryana 120, Harvard Nandan Baguna Garhwal University 236, as per Ministry of Education 2022. Sir, the condition is dire, especially for the University of Delhi, one of India's premier institutions. Delhi University and its colleges started selection for permanent positions after a gap of 10 years only last September. Faculty shortages can be solved by engaging research scholars and visiting faculty, but contract ad hoc employment or a short-term solution. Transparency in the selection committee mechanisms and academic performance indicator calculations with equal emphasis on interviews and experience is integral. Education outlay was hiked by 8% in the Union Budget 2023-24. This needs further improvement. For a future perspective, pedagogic reforms and synchronization of recruitment processes with best global practices are needed. I urge the government to look into the matter. Thank you very much, sir. There should be a word of appreciation. After a long gap, Delhi University, under Vice Chancellor Professor Umesh Singh, has effected massive recruitment, very transparently, very effectively. The point is well taken. Shri Krishnalal Pawar, demand of housing for scheduled caste. There is a disclaimer. I am Chancellor of Delhi University, because Derek was looking at me. So there is a disclaimer. I am Chancellor Delhi University, therefore I know about it. धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यद्यपि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को काफ़ी राहत मिली है, लेकिन एक लंबे समय से छोटे छोटे घरों में इनके परिवार बड़े हो गए हैं तथा बहुत से गांव में या तो पंचायती ज़मीन नहीं थी या तो चकबंदी नहीं हुई है। मान्यवर, मेरा भारत सरकार से सुझाव है, ऐसे तमाम मामलों में ज़मीन अधिग्रहण करके गरीबों के लिए रिहायशी मकान बनाए जाएं। इसके रीत मेरा एक सुझाव भी है, जिस परिवार में 5 से ज़्यादा वयस्क लोग हों, उनको 2 यूनिट मानकर 2 रिहायशी मकान दिए जाएं। इसी से प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना का सपना साकार होगा। धन्यवाद मान्यवर। Shri R. Girirajan, demand to include Tamil Nadu in the National Cyclone Risk Mitigation Project and establish multi-purpose cyclone center at vulnerable locations. Of the 7,516 kilometer long coastline of India, close to 5,700 kilometers is prone to cyclones and tsunamis. 68% of the cultivable area is vulnerable to drought, and hilly areas are at risk from landslides. The coastal areas of Tamil Nadu are increasingly vulnerable to tropical cyclones and the consequent recurrent loss of life and property. The establishment of multi-purpose cyclone center is the main objective of the National Cyclone Risk Mitigation Project and is to minimize vulnerability to cyclones and make people and infrastructure disaster resilient in harmony with the conservation of the coastal ecosystem in the cyclone hazard-prone area. In the first phase, the government had constructed 567 such multi-purpose cyclone centers in Odisha, Andhra, Gujarat, and West Bengal, but not a single MCC was constructed in Tamil Nadu, which has been revenged frequently than any other state in the country. Out of 353 MCCs in the second phase, 112 in Gujarat, 27 in Kerala, 11 in Karnataka, 13 in Maharashtra, 150 in West Bengal, 40 in Goa are to be constructed. Tamil Nadu was revenged continuously from tsunami
in 2004 and cyclones Thane, Nilam, Varda, Okki, Gaja, Nivar and Mandos. I urge the Union Government to include Tamil Nadu in the National Cyclone Risk Mitigation Project to establish multi-purpose cyclone center at vulnerable locations and take appropriate measures for prevention, mitigation, capacity building and preparations to compact cyclone storms in the coming years. Thank you, sir. Sri Lair Singh Siroya demand to boost destination wedding economy in Bharat. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Honorable Chairman sir, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. I draw attention to the potential and creating awareness about destination weddings in India and its impact on our economy, sir. Recently, Honorable PM Shri Narendra Modi spoke about rich families celebrating destination weddings in foreign locations and urged the citizens to choose Bharat as the wedding destination. There is a great possible of creating destination weddings economy in the Bharat. While weddings are traditionally viewed as a personal celebration, their collective impact on the economy is substantial. Wedding festivities contribute significantly to the thriving service sector such as banquet halls, hotels, event management, catering, flower decoration, travel services, photography, music orchestra, etc., etc. Honorable Chairman, sir, the consumption of these diverse services generates numerous job opportunities. According to the estimate from the Confederation of All India Traders, around 5,000 destination weddings are held abroad each year, when an estimated expenditure is of rupees 50,000 crores and above. This trend underscores the need for concerted efforts to retain these celebrations within our country. Bharat boasts a plethora of enchanting locales, ranging from breathtaking natural landscapes, sacred temples, towns, to royal palaces and secluded islands. These places have the potential to become destination not only for Indian weddings but also for international events. The spiritual aspect of civilizational interest of our land with further attract foreign nationals and Indians staying abroad. I urge the government to take proactive initiative such as policies, formulation, creation of dedicated portal, or launch of an informative campaign which would raise awareness about the possibilities of hosting destination weddings within our country and contributing positively to our economy, sir. Thank you very much, sir. Srimati J.B. Mather Hisam demand for enhancement of salary and other service benefits of Anganwadi employees. Chairman, sir, I am deeply obliged by the opportunity, and the special mention is on the subject demand for enhancement of salary and other service benefits of Anganwadi employees. The Anganwadi workers and helpers who are shouldering the immense responsibility of catering to the nutritional and various other developmental needs of the children, and also to the nutritional programs for the adolescent girls and pregnant women, are now in distress. There is no hike in their salary for the past 7 years. The present monthly salary of Anganwadi helpers is rupees 12,000 and that of Anganwadi workers is rupees 8,000 in Kerala. This should be enhanced to a minimum of rupees 21,000. There should be provision to bring about their salary revision along with that of government employees. Even though subscription amount is being collected towards Anganwadi workers and helpers welfare fund, benefits are not enhanced in accordance with the amount collected. Chairman, sir,
Anganwadi employees are facing various difficulties in performing their duties on a daily basis. They are not given performance grant for the data collection work in respect of various programs and projects implemented at various levels, starting from the panchayat level. Since all of them do not have smartphones, they find it practically difficult to upload this data. Every expense, including the payment of electricity and water bills of the Anganwadi centers, travel expenses for attending official meetings, etc., have to be borne by them, which is burdening them even more. In this context, I urge the central government to appoint a high-level commission to study the factual position and to make necessary recommendation for the betterment of Anganwadi helpers and workers. Thank you. Sri Babu Bhai Jaisang Bhai Desai, concern over air, water and soil pollution. माननीय अध्यक्ष श्री, आपने मुझे एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बोलने की तक दी है, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण के गंभीर परिणामों के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण सहित बहुआयामी प्रदूषण चुनौती का सामना कर रहा है। हमारे शहर प्रदूषणों के खतरनाक स्तर से जूझ रहे हैं, जिससे लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। फसल, आयोग, जलाना, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट और निर्माण गतिविधियों इस संकट में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा अपनाने, सार्वजनिक परिवहन वृद्धि और कड़े उत्सर्जन मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूत नीतियाँ और निवेश का पता लगाना अनिवार्य है। हमारी नदियों और जिलों औद्योगिक अपशिष्ट, सीएज और कृषि अपवाह के सूचित हो रही है। इसमें न केवल हमारे जल संसाधन शक्ति पर उन पर निर्भर लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ता है। हमारे जल निकायों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम, अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं और सामुदायिक भागीदारी सहित व्यापक उपाय महत्वपूर्ण है। इससे अलावा रसायनों के अंधाधुंध उपयोग और अनुचित अपशिष्ट निपटाने विधियों के कारण हमारी मिट्टी का क्षरण कृषि उत्पादकता और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। हमारी भूमि की रक्षा के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों और उपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मैं सरकार के प्रदूषण से निपटने के लिए प्राथमिकता देना आवश्यक करता हूँ। माननीय अध्यक्ष श्री, अपने ऋषि मुनियों ने और अपने वेदों और शास्त्रों ने भी बोला है कि जिसका कोई विकल्प नहीं है, ये चीज़ को पूरी अपने को तकेदारी लेने की अपने सबकी फर्ज है। थैंक यू सर। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, concern over fiscal stability of states. Thank you, sir. States face fiscal debilitation with fiscal deficit now set at 3.5% of GSDP, with 0.5% linked to power sector reforms, while centre's estimate stands at 5.9%. In 2018-19, centre raised 62.7% of aggregate resources, while states bore 62.4% of aggregate expenditures, covering only 44.8% from their own resources. The rest came from vertical resources transfers and by contracting debt. There is a notable revenue devolution imbalance, exemplified by Kerala's decline in tax share from 3.875% during 10th Finance Commission period, when Kerala's share of India's population, as per the benchmark 1971 census, was 3.89%, to around 1.925% now, when state's population share is 2.76%. Besides, use of population figures of 2011 census in lieu of 1971 census
in determining horizontal devolution of revenue resources led to decline in the share of southern states. Should include cess and surcharges in divisive pool, as there is significant increase in center's gross tax revenue from 8.16% in 2011-12 to 28.08% in 2021-22, amounting to 7.06 lakh crores, thereby reducing states' effective share in central taxes. Another constriction is the new stipulation to reckon public account balances and borrowings by state entities when fixing states' net borrowing limits, while off-budget borrowings of central entities are neither considered as government debt or reckoned for fixing its borrowing limits. 34% of union revenue is estimated from borrowings and other liabilities. Hence, I urge government to take steps to ensure fiscal stability of states. Thank you, sir. Shri Surender Singh Nagar, concern over air pollution in Delhi NCR. सभापति जी, दिल्ली एनसीआर में हवा प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिसका अधिकांश दोष किसानों पर लगाया जा रहा है। पराली जलाना इसका महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीटी की प्रदूषण गतिविधियों में अगर आप देखें तो वाहन एमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 40% है। दिल्ली एनसीटी में प्रदूषण के लिए अन्य राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि ये विडंबना है कि पराली जैसी जलाने की घटनाओं का उच्चतम प्रतिशत जो है पंजाब से सामने आया है। 2022 की इस अवधि के मुकाबले 63% अधिक मामले पंजाब से आए हैं। अगर अन्य राज्यों के वो आंकड़े देखें तो इस संबंध में हरियाणा में 2022 में पराली जलाने की घटनाओं में 39% कमी आई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 65% पराली जलाने के मामले में कमी आई है। जैसे राज्यों के, इसलिए मैं इससे राज्यों के नेतृत्व की सराहना करता हूं जिन्होंने अपनी नीतिगत बदलाव लागू किए, पराली जलाने के विकल्प जैसे बायोडिकम्पोजर को बढ़ावा दिया। अंत में मैं किसानों पर दोष लगाने की बजाय दिल्ली एनसीटी को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर वाहन निर्माण, विध्वंस, अन्य गतिविधियों सहित सभी स्रोतों से प्रदूषण को संबोधित करते हुए पहल करनी चाहिए। मैं माननीय पर्यावरण जलवायु मंत्री से दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण गुणवत्ता प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। Dr. Shantanu Sen, demand for release of funds under National Health Mission to West Bengal. Thank you, sir. Sir, my special mention is on demand for release of funds under National Health Mission to West Bengal, regarding which our Honorable Chief Minister, Madam Mamata Banerjee, has also written a letter to our learned Prime Minister a few days back. Sir, in our state of West Bengal, in our endeavor, we are providing affordable, accessible and quality health care to all free of cost. There has been significant increase in our budgetary allocation to health care in the last 12 years, and many important public health initiatives such as construction of super specialty hospitals, Shastro Shati, Shishu Shati, Matrima, Chokheralo, etc. have been successfully launched in the last few years, and a large number of people have benefited out of this. Under National Health Mission NHM also, West Bengal has always been front runner in implementation of different public health programs. As a part of National Health Mission scheme, our state has been performing exceedingly well for settling up health and wellness centers in our state. You may be happy to know, sir, that at present there are around 11,000 functional health and wellness centers benefiting to more than 3 lakh people every day. These buildings have been constructed since 2011 in accordance with color branding of state. I am informed that fund release under NHM to West Bengal has been withheld due to non-compliance of certain color branding guidelines for health and wellness centers, despite other conditionalities being fulfilled. The withholding of fund release would adversely deprive the poor people of their benefit. Kindly appreciate
that changes in the color blend by way of repainting so many buildings would involve significant infractuous expenditure. I would therefore urge the government for release of NHM fund for West Bengal and for removal of specific color blending conditionalities for health and wellness centers for fund release under NHM, so that the poor people do not suffer from lack of quality health services. Thank you very much. Honorable members, the remaining special mentions will be taken up tomorrow. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 6th December 2023.